Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.
gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. History is going to be created. Sizzling action. Get ready as we are ready to kickstart this mega event. Can I hear you all? Kasa kai Mumbai? Kai madta Mumbai kar? शोर सुनाई नहीं दे रहा है. This is Digital Level Up, presented to you by Reliance Digital. Are you ready? श्रीमान के चैंट्स, श्रीमान लेजेंड जल्द होंगे हमारे साथ. तैयार हो जाइए. आज का इवेंट हम तक ला रहे हैं Reliance Digital. Of course, Reliance Digital has been at the forefront of the gaming revolution in India, and they are your one-stop destination for everything tech and gaming. We have some massive action coming with Counter-Strike 2, a legacy of over 2 decades. And now we will see India's first LAN Counter-Strike 2 tournament. Are you ready? भारत का सबसे पहला Counter-Strike 2 का LAN टूर्नामेंट और हमारे 2 टीम्स तैयार हैं. एक तरफ होंगे टीम ब्लेजिंग, एक तरफ टीम फायर्ड अप. उनके लिए थोड़ा शोर हो जाइए. And this event is powered by Omen and co-powered by Intel and HyperX. And of course, a big thank you to our venue partners, Nexus Seawards. Can I have a big round of applause for all of you who have turned up from across the country? आपके लिए एक जोरदार applause. Thank you for turning up in such huge numbers. And this day promises lot of records. इतिहास रचने वाले हैं हम. शुरुआत करेंगे हमारी 2 टीम्स के साथ. सबसे पहले हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे टीम फायर्ड अप को. थोड़ा शोर हो जाइए. अगर आप आवाज नहीं करेंगे तो आएंगे नहीं. Can we hear it for Team Fired Up?
इवेंट हुआ था, वहां से ये दो टीम्स ने रास्ता तय किया है इस ग्रैंड फाइनल तक का। टीम ब्लेजिंग एक ऐसी टीम जो सेमीफाइनल में 10 राउंड से पीछे थी, वहां से जीते 13 राउंड्स उन्होंने अपने नाम किए और आज फाइनल में पहुंची हैं। तो टीम ब्लेजिंग और टीम फायर्ड अप के लिए आपकी आवाज जब तक उन तक जाएगी नहीं, वो यहां पे आएंगे नहीं। तो थोड़ा और जोर से श्रीमान यहां है नहीं अब तक, लेकिन इतना शोर तो सोचिए जब वो आएंगे तो क्या हालत होगी। फैन फॉलोइंग हो तो ऐसी, ये होती है असली मोहब्बत, ये होता है असली फैंडम। और अब वक्त आ चुका है, स्वागत करिए टीम फायर्ड अप का अनिरुद्ध, हर्षवर्धन, सूरज, अमित और किरण। वेलकम गाइस, द स्टेज इज ऑल योर्स। थोड़ी आवाज, शोर, सिर्फ श्रीमान को सपोर्ट करेंगे, इन्हें भी तो आपका सपोर्ट चाहिए। And this is the moment where I would like to welcome our second finalist, Team Blazing. Can you come on the stage? Rahul, Himanshu, Shikhar, Ankush, Shantanu, and Melvin. यहां पर टीम फायर्ड अप, उनके बाजू में एक ऐसी टीम जो सेमीफाइनल में कहते ना हार रही थी और हार के जबड़ों से जीत छीन कर आए हैं। ये 5 बार हो गए थे, एक ऐसी जीत जहां 10 राउंड से पीछे थे। तो सबसे पहले उस जीत के लिए तालियां। एंड द वेरी एक्सपीरियंस्ड रॉसी मेरे बाएं तरफ, जो टीम फायर्ड अप के सबसे एक्सपीरियंस्ड गेमर हैं। रॉसी, हाउ इज द जोश? Josh is really good. I'm really happy and great that I could see so many crowd here. And thanks for coming, guys. I hope you guys support us when we start playing in the game, and you will see what Fired Up is made up of. You'll see what fired up is made up of. अपना जलवा ये जरूर बिखेरेंगे, लेकिन एक सवाल है, आपकी टीम में 2 ऐसे गेमर्स हैं जिनका नाम गोस्ट है। Yep. 2 गोस्ट, तो आप लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते टाइम कंफ्यूजन नहीं होती है? So when we formed the team, we made a ground rule that we are not gonna call Ghost, either of them. We just gonna call them with their first name. Okay. One is Suraj, and this is Hamid. Okay, can we have a huge round of applause for the 2 ghosts, Suraj and Hamid? And of course, team fired up, उनके नाम में ही fired up है, पूरी तरह से आग बबूला हो चुके हैं, तैयार हैं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले हैं टीम ब्लेजिंग। So my first question obviously is, इतनी बड़ी जीत सेमीफाइनल में, उस जीत से अब एक अलग लक्ष्य, इस ट्रॉफी को पाने का लक्ष्य। How's the माहौल in your team? How's the atmosphere? Mahal is very good, and our team is very fired up too. So let's see where the underdog team goes. So this is the first big LAN event, and we'll try to give a good fight against them. I want to know if you have a message, कुछ जो होता है ना माइंड गेम्स, कुछ कहना चाहोगे उनको वहाँ पे
इतनी एक्सपीरियंस टीम है, आपके तरफ से तो आपने कह दिया आप अंडरडॉग्स हो. एनी मैसेज दैट यू वांट टू पास ऑन टू देम बिफोर वी किक स्टार्ट दिस मेगा इवेंट? मुंबई में हारोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बेस्ट देना अपना थोड़ा. ओ मुंबई में हारोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. कुछ कहना चाहोगे रॉसी? हाँ? वो कह रहे हैं आपको मुंबई में हराना नहीं चाहते हो. Oh, okay. हमारे गेमर्स सिर्फ गेमिंग एक्शन के टाइम Okay. अपने स्किल्स दिखाते हैं. I don't think those Mumbaians will win today, but I wish them luck. I'm sorry I can't understand Hindi, but somehow I can. तो एक ऐसी बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी टीम फायर्ड अप है वो ज्यादातर मुंबई के बाहर से, सभी आप मुंबई के बाहर से हो. Yes, Am I yes. right? Two from South Karnataka, and one Surat, and one from Mumbai. सिर्फ एक मुंबई से हैं और यहाँ पर जो हमारी टीम ब्लेजिंग है उसमें आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई. Okay, so we have a lot of gamers from across the country. That just shows how the Indian gaming community has created this revolution. एशियन गेम्स भी जो हाल ही में हंगजो चाइना में हुए थे, वहाँ भी हमने देखा किस तरह से ई स्पोर्ट्स ने अपना दबदबा दिखाया. So this is great, and these rivalries that you're seeing, these rivalries are meant to make you better. These rivalries are meant to make you better and not bitter. So Yes, sir. they will push each other to the limits to get better, and we will want them to play their hearts out. So can we hear it once again for Team Blazing and Team Fired Up? Counter Strike 2 का ये धमाकेदार मुकाबला शुरू होने जा रहा है. I want to turn it over to our wonderful casters, Krips and Vivek. Take it forward from here, and I request the teams to please take your seats, and wishing you the absolute best. Give it your all. Give your hearts out, and over to Krips and Vivek, our casters for the day. Ladies and gentlemen, we are live with the citywide championship of the digital level up here at Nexus Seawards, powered by Omen and co-powered by Intel and HyperX. My name is Vivek. With me is Krips, and we have some CS2 action on our hands. It's Fired Up versus Blaze. It's a best of 3, and the winner will go home with the lion's share of the prize money and obviously the title of champion. द टाइटल ऑफ द चैंपियंस. यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए हैं ये इवेंट देखने के लिए, आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज श्रीमान लेजेंड के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन दोस्तों श्रीमान इस कंट्री के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीमर्स है. काउंटर स्ट्राइक ई स्पोर्ट्स की दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम्स है. तो अगर आप उन्हें सपोर्ट करने आए हो, इन प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर लीजिए थोड़ा, बिकॉज ये लोग अपनी जी जान लगा के यहाँ पे जीतने आए हैं. जरा सपोर्ट हो जाए इन लोग के लिए. तो जरा मैं आपको इन टीम्स के बारे में बताता हूँ. On my right side of the stage is FiredUP Gaming, एक ऐसी टीम जो इस देश के हर एक कॉर्नर से गेमर्स को उठा के यहाँ पे लाई है. They are a combination of many teams. And on my left hand side is Team Blazing. खुद को वो लोग अंडरडॉग्स बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग अपना ट्रेल ब्लेज करके फाइनल्स तक पहुंचे हैं, अलग ही वाइब है इन अंडरडॉग्स की. जरूर. एक्चुअली ऑनलाइन फेज में उनका एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक था. आई थिंक दे वर डाउन 1-11 और 2-11 एंड दे मेड अ कमबैक फ्रॉम दैट. अगर आप फर्स्ट टाइम CS2 एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल सा गेम है. whoever reaches 13 points first wins. It's a 5v5 गेम. आपके हाथ में गन होता है, जो टेररिस्ट साइड होते हैं उनके पास बॉम्ब होता है. बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, बहुत सिंपल और इजी और फन गेम है फॉलो करने के लिए. सो इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम, don't worry, you're in good hands and you're going to be watching some of India's finest duke it out. So it should be entertaining, it should be fun. We have a little bit of time to run through the rosters, Krips. Anyone that stands out for you?
ऑब्वियसली द IGL हिमसेल्फ ब्लेज, जिनके ऊपर ये टीम का नाम बेस्ड है, हाँ। वो टीम के कैप्टन है. मीनवाइल फार स्काई, ज़ोडिएक, फ्लिकर एंड येलो फ्लैश, ये लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये पूरे टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स में अब तक इतनी ज़्यादा तकलीफें झेलनी नहीं पड़ी है. ऑब्वियसली एक्सेप्ट उनके लास्ट मैच में जहाँ पे वो लोग को बहुत बड़ा कमबैक करके आना पड़ा. करेक्ट. और वो भी 2 easy के सामने. वो भी 2 easy के सामने, जो भी उनका नाम 2 easy रहेगा, लेकिन दे आर अ वेरी डिफिकल्ट टीम टू डिफीट. बिल्कुल. तो इन लोग को यहाँ पे पहुंचने में जितनी डिफिकल्टीज हुई है, वो शायद अभी और दुगनी हो जाएंगी when they are meeting their opponents FiredUP Gaming. Let's take a look at that roster. इस टीम में हर एक प्लेयर जो है, उनको मैं कम से कम 10 साल से खेलते हुए देख रहा हूँ. मेरा पहला मुलाकात हुआ था चैम्प से अक्रॉस अराउंड 10 years ago, जब वो काउंटर स्ट्राइक 1.6 खेलते थे. ना ही काउंटर स्ट्राइक गो, काउंटर स्ट्राइक 1.6, मतलब इतना पुराना गेम है, वो तभी से खेलते आ रहे हैं. चैम्प ये जब अपने बाकी टीममेट्स को मिले थे, ये उनको इतने से जानते नहीं थे. ये टीम बनाया है इन्होंने लगभग कुछ 2 या 3 हफ्ते पहले, इस टूर्नामेंट के शुरू होने के जस्ट थोड़ी देर पहले. वाह. तो ये टीम बहुत ही कम देर में असेंबल हुई है, लेकिन इतने कम टाइम खेलने के बावजूद एक साथ इनने इतनी सिनर्जी बढ़ाई है अपनी, एंड नाउ दे आर हियर इन द फाइनल्स. आई मीन एक नया टीम का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज भी होता है. एडवांटेज है कि दूसरे लोग आपके लिए इतना प्रिपेयर नहीं कर सकते हो. इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट वर्सेस जिम्बाब्वे. एवरी वंस इन अ व्हाइल जिम्बाब्वे विल बीट यू. कुछ भी हो सकता है ऐसे मैचअप्स में. बट ये जो टीम है FiredUP, दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड. They all have a basic level of team play, so they are going to come prepared. They are an unknown factor. If anything, I don't think they're the underdogs in this, although they're a new team. Exactly. Well, हमने टीम्स के प्लेयर्स देख लिए, देखते हैं ये लोग कहाँ पे लड़ने वाले हैं. मैप वीडियो की तरफ चलते हैं. इंटरेस्टिंगली इन्फर्नो और अनुबिस स्टार्टिंग में ही बैन कर दिए गए हैं. एक ये बहुत ही कैसे बताओ, आउट देयर वीडियो है. फर्स्ट बैन इन्फर्नो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक लगभग 4 साल बैक टू बैक इंडियन CS और इंडियन CSGO में सिर्फ इन्फर्नो खेला जाता था. सो इट इज अ रिफ्रेशिंग चेंज. सेकेंड बैन जो है अनुबिस का, ओके आई गेट दैट, बट लुक एट प्लेसिंग. देयर फर्स्ट पिक इज न्यूक. They're going to open with nuke, and if they get off to a good, they have to win nuke. If they get off to a good start on nuke, they're going to be a lot more comfortable throughout this best of 3. FiredUP has forced an Ancient here. Now, Ancient is a very, in my opinion, a very puggish map. Anything is possible. There's a lot of scope for the CTs to take aggressive mid control. The A side is just awful to hold. You just have one box on the CT side. You really don't want to be holding that side. So it's a very dynamic map. It's going to be a fun map. It's really going to boil down to individual plays and misplays. And then we have Overpass and Mirage banned out, Crips. Overpass and Mirage, I can understand Mirage being banned because Mirage का मेटा जो है वो बहुत टाइम से सेम रहा है, चेंज नहीं हुआ है इतने टाइम से. Overpass on the other hand, I really thought कि a team like FiredUP will shine on Overpass. That's probably why Blazing ने वो वाला मैप बैन कर दिया था. And Overpass, मतलब if you take a look at the strengths of these players, Champ वो बहुत ज़्यादा aggressive खेल सकते हैं, especially as an assaulter. Rossi बहुत ज़्यादा flexible है, rotation उनके almost हमेशा point पे रहते हैं. तो on a map like Overpass, especially जब defense side को rotation में बिल्कुल तकलीफ नहीं होएगी, these guys would have owned, and I think इसलिए Blazing ने वो map ban किया. Actually, I completely agree with you, because I remember looking at Rossi where sometime back when he was with SK Rossi in a team called Blaze, and one of the strongest maps was Overpass. Mazel would run the op on that map, mainly towards A long. Rossi was actually more of the entry frag. I was going to say duelist for a second, but it was more him than SK Rossi. But yeah, they're not going to choose to play Overpass, and we're a decider, if this goes all the way to a best of 3, is going to be Vertigo, which, again, personally, in my opinion, I'm not a fan of watching that map. I do not enjoy watching that map competitively. I would like to see Train being remade for CS2, get Train back into the map pool, maybe pull out Cash. Long shot, bro, but okay. Train, Cash, all those classic old maps. Is there a reason why we don't have Train in CS2? Don't ask me the philosophies of what Valve creators are up to, but I still like Vertigo. But what I would really like to see is a little variation
क्योंकि वर्टिगो CSGO में जिस तरह से खेलते थे वो अभी भी सेम है, CS2 में चेंज नहीं हुआ है, और मे बी इट्स अ लिटिल टू सून, तो उनको जिस तरह से दिखाते हैं वो शायद चेंज हो. आई रियली होप कि उस टाइम पे वी गेट टू सी समथिंग डिफरेंट इन वर्टिगो. Any predictions for the first map? I think FiredUp Gaming should win this 2-0, not just the first map. I think they should win this 2-0. Really? Yes, because I've seen these players so many times. Okay, because अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा टाइम है, मैं इन प्लेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री देता हूँ. जरूर. ठीक है, तो हमारा पहला प्लेयर जो है घोस्ट XD सूरज, वो खेलता था रेकनिंग esports की तरफ से. रेकनिंग esports, one of the biggest names in Indian gaming scene, not just Counter Strike, not just Valorant or any other scene, but वो खेलते थे रेकनिंग esports के लिए. वो इस टीम में आए हैं. नेक्स्ट प्लेयर हमीद, एक अनदर घोस्ट, एक और घोस्ट है, वो खेलते थे मार्कोस गेमिंग के लिए. मार्कोस गेमिंग BGMI में बहुत बड़ा नाम था. Any Marcos supporters? Yeah, we have a couple over here. Yeah, we have a couple Marcos supporters over here. तो मार्कोस गेमिंग के CS टीम में घोस्ट खेलते थे, और वो भी यहाँ पे है. नेक्स्ट वी हैव रॉसी हिमसेल्फ, मेडल esports के लिए खेला करते थे, और पहले वो साउथ इंडियन काउंटर स्ट्राइक के मसीहा थे. Absolutely. और दोनों मेडल और रेकनिंग, एटलीस्ट जो लास्ट CSGO की टूर्नामेंट हुई थी, both those teams had a lot of imports. Exactly. So they had that knowledge transfer. They played with a slightly more different play style. Their defaults, their fundamentals should be a lot stronger. So that's going to be more interesting as well. But yeah, please do continue with your history deep dive. History deep dive. And finally आते हैं Nox. वो खेलते थे Enigma Gaming के लिए. Enigma Gaming भी बहुत बड़ी नाम है in this country, not just for Counter Strike, but yeah, they were also a BGMI team. Any Enigma fans? Enigma BGMI fans? One. Quite a lot of people. One. Okay, some more. No, वो तो हमें दिख रहा है. There's a lot of people raising their hands over there. Okay. So these 4 players from 4 different teams, from Reckoning, from Medal Esports, from Enigma, and from Marcos Gaming, 4 बड़े organizations के players अब इस टीम में खेलेंगे, and they are all brought here together by their guy called Champ. Champ भी बहुत टाइम से खेलते हुए देखता हुआ आ रहा हूँ मैं उन्हें. Like I'm pretty sure मैंने भी उनके साथ 1-2 गेम्स खेले रहेंगे back in the day, like कुछ 6 या 7 साल पहले. And recently उनने बहुत ज़्यादा अच्छे performances दिखाए हैं. He's won 4 LAN tournaments this year already. Yeah. This might just be his 5th. Wow, 4 LAN wins already. 4 LAN wins already, exactly. Across CSGO and CS2 both, of course. Yeah. लेकिन 4 tournaments एक ही साल में जीतना. इसके पहले पिछले साल भी he won the Taiwan Excellence Cup as well. तो for him it's gonna be a win streak. And if he manages to win over here, he will obviously go down as one of the strongest competitors in this country. Yeah. On the other hand, जो हमारे दूसरी टीम है, टीम Blazing, उनका पूरा स्टोरी अंडरडॉग स्टोरी है. इट्स अ स्टोरी ऑफ 5 फ्रेंड्स जो ऑनलाइन मिले थे, और इस बार वो पहली बार एक दूसरे को रियल लाइफ में देख रहे हैं. 3 लोग दिल्ली से, 1 प्लेयर फ्रॉम गुजरात, 1 प्लेयर फ्रॉम मुंबई, और ये 5 लोग इस टूर्नामेंट के लिए पहली बार रियल लाइफ में एक दूसरे को मिल रहे हैं. Wow. तो वो वाइब्स बहुत ही अलग होंगी. I mean, both these teams, if you look at it, quite simply, Blazing is supposed to be the underdog coming into this matchup, right? FiredUP, they've got all this experience. Champ has won so many LANs. They played with some of the best orgs in BGMI, Enigma, Marco, so on and so forth, and even Reckoning. Can't forget Reckoning. So they're coming with a lot of experience, a lot more prep. But this is max rounds. 12. Yeah. And 13 to win. It's a very different tempo and a very different momentum altogether. So I just want to see who starts out on the CT side and who starts out on the T side on Nuke, because that's going to really determine a lot. But yes, Trips. ये तो हम काउंटर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं. Yeah. लेकिन सिर्फ ये गेम नहीं खेलने वाला है आज हम लोग यहाँ पे. Oh yeah. Of course, ये तो हम लोग स्टार्टिंग के मैच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप ये सारी जनता को देख रहे हो, इतने सारे लोग आए हैं आज सारे BGMI सुपरस्टार्स को मिलने के लिए भी. So later on in the day we will also have a BGMI TDM show match, जहाँ पे आप सबके जहीते श्रीमान लेजेंड भी होने वाले हैं.
This is my BGMI wet dream. Shriman Legends in a TDM best of 5 show match. Please do not go anywhere. Exactly. Other लेकिन than the दोस्तों, bathroom. लेकिन दोस्तों, ये TDM के मैचेस काउंटर स्ट्राइक के मैचेस के बाद होने वाले हैं, तो आई होप आप जितने जोश से श्रीमान के लिए चीयर कर रहे हो, इन प्लेयर्स के लिए भी उतने ही जोश से चीयर करोगे कि नहीं? That's the spirit. That's the spirit. Support the underdogs. Support all the gamers that you can. Well, Vivek, let's get back to talking about Counter Strike. Yep. I think who starts out on the CT side and who starts out on the T side is going to be somewhat crucial on Nuke. Yeah, quite crucial. It's just a little bit easier to play the CT side. That used to be the case. There was a point in time जब Nuke पे खेलना CT side पे obviously easier रहता था. लेकिन फिर 2018 में when Astralis came around, उनने थोड़ा बहुत मेटा बदला. उसके बाद Elite Simple Class Navi जब वो लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक के रोस्टर चेंज होने के बाद आए, तभी they started to reform the entire map of Nuke, and now even the T side of Nuke looks quite good. Yeah. It used to be a CT favored map, now it's more T favored or even. But sometimes I just feel it's easier to play the CT side because to an extent, you don't have to really innovate unless you're called upon. It more calls upon your fundamentals, basic communication, आप किस तरह से sites hold करते हो, आपका utility usage, जो BGMI में भी एक काफ़ी important सा चीज़ है. तो अगर देखा जाए CT side थोड़ा मतलब एक LAN के लिए starting out on the CT side just makes life a little bit easier in my opinion. Of course, CT economy काफ़ी nerfed है और CT side खेलने में अलग-अलग difficulties होते हैं. But हाँ, एक comfort level होता है CT side खेलने पे. अभी के लिए it looks as if all the players are just getting their final tweaks going on all their settings. But guys, this is insane. So many people have turned out for Shriman Legends. I know, right? Just look around the mall. I can easily guess that there are just 1,000 people. I think it's minimum. Minimum, and this is just early on in the day. Exactly. Like, give this another hour or two, and there's just going to be more people. And ये लोग, I mean, hats off to the audience as well. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे 10 बजे से खड़े हैं. Absolutely. हम लोग, I think, हम यहाँ पे पहुँचे थे 9:30 के करीब. हाँ. और already बाहर लाइन लगा था. Exactly. I think already 9:30 बजे के आसपास कुछ 100-150 लोग ऐसे ही बाहर रुके थे एंट्री के लिए. सिक्योरिटी गार्ड पेशेंटली, अरे क्या हो रहा है, कोई आता ही नहीं है मॉल पे 9:30 बजे को. What the hell is going on? So yeah, I think this is a very unique kind of fan love that I've not seen for too many people, and that's why he's a legend, and that's why he's Shriman Legend. Exactly. I remember even once before in Navi Mumbai, I saw the same thing. I saw the same amount of craze, maybe more. Just a very polite request, do not break any barricades and don't chop security. That's all. That's all. That can be a real concern in certain occasions. That is awesome. But yeah, and I love the signs that people have got going. Can you guys hold up your signs? And we do not have the IPL cameraman. We have another one that's pretty good. He's an esports cameraman. And love for us to look at some of the signs that they're all holding up. Yeah, he was actually showing some of those signs. Yeah. And some of those are really creative. Absolutely. I saw something called the Shriman Foundation. Yes. I want to see that sign. It's somewhere over there. Yeah. Even that was held up for quite a bit. Shriman Foundation sign. I'm sure we'll switch to it for the time being. However, abhi ke liye, let's get back to this game. Yeah. Back to the game. Best of 3, Nuke. First map, I mean, Cripps believes that FiredUP should have an easy 2-0 in this best of 3. He went on to call the entire best of 3. I think it should be, I mean, of course, FiredUP are the favorites. Nuke is where Blazing really have to make a statement. This is their map pick. They need to win the one map they've chosen. If they can manage to do that,
they're going to find a lot of confidence in this best of 3, and then it can go really anywhere. So watch out for the first map. That's where this entire momentum of this best of 3 is going to be set. But yeah, Fired Up with a couple of LAN wins under their IGL's belt. They're coming into this with a lot of confidence. They are the heavy favorites. And I think our second map, Ancient, is... Oh yeah, that's going to be quite interesting. I actually have started to like Ancient quite a lot these days. Like, I like Ancient. I don't like the textures and the lighting. I mean, that's a personal problem, bro. अभी तुम low settings पे खेलते हो, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. Yeah, fair enough. Ancient का क्या scene है ना? At least the way it used to be played back in the day, where you would just double smoke mid on either side and take control of bottom and even take control near the wooden boxes area. I think that can now be changed given that CS2 में आप nade से smoke को dissipate कर सकते हो. तो because of that, I hope meta थोड़ा बहुत change होएगा. Plus at the same time, I don't really know how these guys will adapt to the change because यहाँ पे जो team Blazing है, this is their first ever LAN tournament. This is their first big LAN. तो obviously इतने सारे लोग के सामने खेलना when half of them are not even cheering for you, it can be quite nerve-wracking. Yeah. Secondly, जो दूसरी टीम है, टीम फायर्ड अप गेमिंग, वो 2018 से बहुत सारे लैंड्स खेल चुके हैं. उनमें से काफी सारे लैंड्स वो जीते भी हैं. सो सुपर एक्सपीरियंस टीम वर्सेस अ सुपर न्यू टीम, अंडरडॉग्स कह सकते हैं हम इन्हें. और while I love supporting underdogs, यहाँ पे उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कठिन हैं. Yeah, I was just saying this a little bit earlier. It really boils down to Nuke. If they can somehow win their map pick, which is not entirely outside the realm of possibility, it can happen. I think then this Special 3 could take a completely different turn, and it could be anyone's for the taking. Listen to the chanting. Listen to everyone calling out Shriman's name. By the way, दोस्तों, श्रीमान भाई का एक मैसेज आया आप सबके लिए. एक मैसेज आया है उनकी तरफ से. श्रीमान भाई कहते हैं कि वो ये मॉल में लगभग 4 या 5 बजे के आसपास आने वाले हैं, और तब तक वो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये पार्टिसिपेंट्स को भी सपोर्ट करो. वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आराम से ये मैचेस को एंजॉय करिए, और जब वो आएंगे तब वो आपसे मिलेंगे. शाम को आ जाएंगे वो. उनका ये मैसेज है. श्रीमान जी, अगर आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस की आवाज मेरे से ज्यादा तेज आ रही होगी. क्या एनर्जी है. तो दोस्तों, काउंटर स्ट्राइक हो जाए. वेरी सून वील बी स्टार्टिंग विद दीज मैचेस. बेस्ट ऑफ 3 मुकाबला होने वाला है यहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स के लिए. ये जो टीम्स आपके सामने आपको दिख रही है, वो दोनों टीम्स बहुत मुश्किलों से ऑनलाइन क्वालिफायर होते हुए आए हैं. इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टीम्स को हराया भी है. टीम फायर्ड अप ने गॉड्स रेन को हराया, कोहीजन को हराया. They even defeated Revenant Esports and Kingpins. इतने सारे टीम्स को हराने के बाद वो लोग यहाँ फाइनल्स में पहुंचे हैं. And these were some of the toughest teams that they beat. In fact, मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके सारे toughest opponents को तो उन्होंने सेमीफाइनल्स में ही पछाड़ दिया था. And फाइनल्स में उनको शायद इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, unless Team Blazing can step up and give us a show. विवेक, आपको नहीं लगता ये क्राउड ज्यादा बढ़ती जा रही है?
5 मिनट पहले जितने तेजी से नारे लग रहे थे श्रीमान जी के, अभी तो और भी ज्यादा लग रहे हैं. दुगनी हो गई आवाज. No, no, I think when he comes, it's going to be much louder than this. Exactly. Come on, guys. ये फर्स्ट फ्लोर पे जो बैक बेंचर्स हैं उनका थोड़ा एनर्जी डाउन है, बट I think Yeah. And that's the love and support we get for one of the most popular streamers in this country. And he isn't the only one, by the way. और भी काफी सारे streamers आने वाले हैं उनके साथ, जिनके साथ एक बहुत ही अच्छा शो मैच हमें देखने मिलेगा. I think the show match should be a lot of fun. Yeah. Oh, TDM, definitely. TDM is, I think, one of the most fun modes. I mean, कभी कभार full on battle royale खेलने का मन नहीं करता है. Weekend ही खेल के थक चुके हैं लोग. So just jump into TDM and you see your favorite fans on TDM. विवेक, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस आपस में कंपटीशन लगा रही है. हाँ. राइट साइड की ऑडियंस अब जोर से चिल्लाने लगी, तब कैमरामैन उनकी तरफ गए, और अब लेफ्ट साइड के लोग भी जोर से चिल्लाने लगे हैं. आई थिंक ये लोग आपस में चीयरिंग का कंपटीशन लगाएंगे. ऑल फॉर द लवली श्रीमान लेजेंड्स. एक्चुअली बीच में क्रिप्स गेम्स के बीच में एक कंपटीशन शुरू हुआ था, और ये गेम टाइटल्स के टूर्नामेंट्स काफ़ी हो चुके हैं. तो राइट साइड में थोड़ा आई थिंक जनरली एक पबजी ऑडियंस है. By the way, I have a message for all the esports fans जो यहाँ पे रुके हुए हैं. This tournament, it's mostly brought to you by Reliance Digital, and they are the ones who made this possible. But साथ ही साथ this event is also powered by Omen. अगर आप उनके products check out करना चाहते हैं, there is a lovely booth over there which you guys can go to, and you can check out all the Omen products over there. They have a lot of cool headphones and laptops on display. आप उन्हें भी try कर सकते हो. At the same time, this event is co-powered by Intel and HyperX. HyperX has some of the best keyboards and mics in the entirety of esports. I personally use a HyperX keyboard. Absolutely. HyperX headsets. A lot of commentators began their journey on HyperX headsets. Yeah, me too. The Quadcast is a great mic, and they're zero latency headsets, in-ears for your mobile gaming or your PC gaming. So there's solid options. You should definitely go check out the HyperX products. There's someone from HyperX here as well. His hand is in the air. Go say hi to him. Ask him about where you can find a Navratri sale, if there is one. If there isn't one, HyperX, please. We need a Navratri sale. So मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे. श्रीमान लेजेंड्स का मैसेज आया है कि वो 4 या 5 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे. तब तक वो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैन से इस टूर्नामेंट का मजा उठाइए और ये CS टीम्स को सपोर्ट कीजिए. और अगर आप यहाँ पे खड़े होके बोर हो गए हैं तो जाके HyperX and Omen के प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कर लीजिए. They have a lot of cool items for display and for sale. आपको अगर उन्हें ट्राई करना है
तो डेफिनेटली गो अहेड ओवर टुवर्ड्स देयर बूथ. Yep. And जैसे कि आप देख सकते हो स्टेज पे सारे के सारे प्रो प्लेयर्स भी HyperX के हेडसेट्स यूज कर रहे हैं. They're just some of the best mics. They're really good headsets for positional audio. You know exactly where your enemy is coming from. And yeah. सार्थक जी, लगता है हाँ जी। आपको याद कर रहे हैं कोई. फैंडम हो तो ऐसे डाई हार्ड फैंस कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं. श्रीमान दादा के भक्त हैं ये सब. जरा उन तक आवाज पहुंचाइए. श्रीमान 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 एकच वादा, श्रीमान दादा, एकच वादा, श्रीमान दादा. एकच वादा. अरे श्रीमान दादा के आगे कोई बोल सकता है क्या? श्रीमान दादा. आप सभी के लिए एक न्यूज है. श्रीमान दादा, श्रीमान लेजेंड 5 बजे आप सभी के बीच होंगे, यहाँ उपस्थित होंगे. तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा. 5 बजे यहाँ तहलका मचने वाला है. अगर अभी ये हाल है, पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन चलेगा. दिन चलेगा, पूरी रात. एक मैसेज आया श्रीमान दादा के तरफ से आप सभी के लिए. सुनना चाहोगे? तो श्रीमान दादा का ये कहना है कि आप सब आराम से इंतजार करिए. वो आएंगे जरूर 5, 5:30 लेटेस्ट. लेकिन आप ज्यादा यहाँ वहाँ भागिए मत मॉल में. उनको पता चला कि सब उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका मैसेज है रुकिए, सब्र करिए, मैं जरूर आऊंगा. और शांति से गेम एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ जो काउंटर स्ट्राइक 2 का मुकाबला चल रहा है उसका आनंद उठाइए. श्रीमान दादा जरूर आएंगे. एकच वादा, एकच वादा. श्रीमान दादा. श्रीमान दादा. लादना, लादना. अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? कोई लातूर से आया है? जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लातूर का जो बैनर है यहाँ पीछे. मुझे बताइए कहाँ से आए आप लोग, एक एक करके. दिल्ली. दिल्ली से कोई आया है श्रीमान दादा के लिए? कोई लातूर से? और घनसोली. नेहरू में ही रहते हैं. सीउड़ से ही? अंधेरी से. अंधेरी, डोंबिवली, दादर, पूरा मुंबई तो आया है. और साथ ही साथ भारत के कोने कोने से लोग आए हैं. किसके लिए आए हैं? अरे एकच वादा. अरे बांडल की फूल बांडल की. चलिए देखते हैं और कौन कौन मौजूद है यहाँ श्रीमान दादा के. और कौन से फैंस है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा. और कोई है? श्रीमान दादा के बाकी डाई हार्ड फैंस कहाँ पे हैं? किसी को मैसेज देना है श्रीमान दादा को, और किसी को बोलना है आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, वो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं. श्रीमान भाऊ लवकर ये वाट बघतोय तुझी. लवकर ये, पब्लिक एडी झाले तुझ्यासाठी. पूर्ण बंदी गेले, अख्खी सीवूड मॉल बंद झाले. अक्का ये लवकर. पिछली बार जब पुणे में श्रीमान दादा आए थे तो पुणे के मॉल में तहलका मच गया था. आज सीवुड के मॉल को हिलाकर रख दिया आपके फैंस ने. श्रीमान दादा लवकर आइए कह रहे हैं सभी. और कोई मैसेज? नहीं, मॉल वालों को बोला है कि इंश्योरेंस रखो अपना, क्योंकि कुछ क्या हो सकता है हम लोग को भी मालूम नहीं है. कुछ भी मुमकिन है. श्रीमान दादा के जैसे फैंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ऐसे भक्त डायहार्ड फैंस है, इतनी मोहब्बत करते हैं. और ये सम्मान श्रीमान दादा ने अपने स्ट्रीम से, अपने काम से. बीजीएमआई के बादशाह हैं श्रीमान दादा. और आपके अच्छा है बीजीएमआई का इनके फैंस के हिसाब से. और
इनके दिलों में राज करते हैं श्रीमान दादा। यहाँ पे एक छोटे से फैन है, आप श्रीमान दादा के लिए क्या कहेंगे? श्रीमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान दादा? श्रीमान दादा हमारी जान है। श्रीमान दादा यहाँ पर 5 बजे जब आएंगे तो मैं सोच भी नहीं सकता क्या हाल होगा। जब अभी ये हाल है तो 5 बजे इंश्योरेंस किसी ने कहा है मॉल को अपना पक्का कर लेना चाहिए। मचा डालेंगे। मॉल का इंश्योरेंस निकाल के रखो, मॉल का इंश्योरेंस निकालो। अच्छा ये बताओ श्रीमान दादा की एक ऐसी क्वालिटी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती? सबको मोटिवेट करते हैं वो, अकेले नहीं सबको। एक ऐसे बादशाह हैं जो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं, सिर्फ अकेले नहीं। वो कितने और ऐसे हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के सदस्य हैं जिनको ऊपर लाए हैं श्रीमान लेजेंड। और ये नज़ारे, ये कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह का ये हाल है। श्रीमान दादा तो अभी तक आए भी नहीं हैं और टूट पड़े हैं उनके फैंस। ये होती है मोहब्बत, ये होती है। आराम से श्रीमान दादा का ही मैसेज है, शांति रखिए, ज्यादा तोड़फोड़ कुछ करने की जरूरत नहीं। वो आएंगे, आप सभी से मिलेंगे आराम से। श्रीमान दादा का शोर जारी रखिए, वो आपकी स्ट्रीम पर आप सभी को देख रहे हैं। पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्च्यू होती है। आई एम श्योर श्रीमान भाई ने भी हम सबको यही सिखाया रहेगा।
बहुत lot of Counter-Strike action to begin. It is absolutely crazy over here. अगर आप नवी मुंबई में हो या फिर नवी मुंबई छोड़ो मुंबई में किधर भी हो जल्दी यहाँ पे आइए. This tournament is happening in Nerul Seawoods and they are our venue partner for today. हम बहुत ही जल्दी Counter-Strike 2 का tournament शुरू करने वाले हैं and after Counter-Strike 2 we will also have BGMI TDM matches with a lot of influencers and a lot of streamers too. Show match होने वाला है so उसमें भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा. But before we start the show we're gonna take a small break. Don't go anywhere. We will be right back with all the action. Overheating is a
gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.
Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Ladies and gentlemen, welcome back to Reliance Digital Level Up City Championship. मेरा नाम है क्रिप्स, मेरे साथ है विवेक, and I know आप लोग बहुत देर से Counter-Strike 2 देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं. हम आपको और देर नहीं रुकाएंगे. मेरे पीछे है some of the finest gamers in this country और इन लोग की कहानियाँ बहुत ही अनोखी है. On my right side is Team FiredUP, a combination of 4 different teams. वो एक साथ मिलजुल के अभी खेलने वाले हैं to unleash a whole new form of terror. And on the other hand, we have the underdogs, teams and players who have been trying to grind and knock on the doors of Tier 1 Counter-Strike since ages, and now finally the door has been answered. We have Team Blazing. इन दोनों का मुकाबला बहुत ही exciting होने वाला है. We have a best of 3 grand finals, so let's get started. Well, here we go. We have already begun with this game, and as you can see, these players also have their faces on the minimap, so this is going to be quite fun. FiredUP Gaming शुरू करेंगे CD side पे. Meanwhile, Blazing is on the T side. और काफी slow start होने वाला है. एक defaultish approach है फिलहाल के लिए तो. FiredUP के 2 players A side पे है. Meanwhile, one of them on top of Hut, the other one Mini Garage. Outer पे defense इतना ज़्यादा strong है नहीं, लेकिन Blazing ने भी अब तक फिलहाल कोई भी moves make नहीं किए हैं. वो भी default hold कर रहे हैं.
Yeah, eventually it looks as the hut is going to be breached open towards Squeaky. Ghost will draw first blood here, and he's got Champ by his side on top of Hut to clean up the rest of this attack. Blazing, they are really considering the options here as Fasky gets one kill, but that's all as FiredUP wins a very easy pistol round. Yeah, that was quite easy. 30 seconds wait किया team Blazing ने, लेकिन उसके बाद as soon as they started to open the squeaky doors, FiredUP Gaming के जो crossfires थे वो बहुत ही ज़्यादा strong थे. I wouldn't even say that they were super strong, they were super unique. They were just normal, and that alone was enough to stop Blazing in their tracks. Yep. The only one real change in economy that you want to take note of is the pistol loss bonus. That's got Blazing something to work with, but they're not going to invest any of that money. They're just going to run their Glocks. Not a single smoke to work with. Eventually, they're going to get picked off one by one. Champ will get a little bit of information towards Hut. But Crips just discipline के साथ FiredUP Gaming खेल रही है. वो बहुत ही respectable और commendable है actually. Just notice a little bit of framing over there. Don't mind that. लेकिन FiredUP Gaming हट के अंदर एग्रेस करके एक और पिक निकाल चुके हैं. उनको मालूम पड़ जाएगा कि ब्लेजिंग अंदर जाते ही रैंप कंट्रोल लेके ब्लेज बी पे प्लांट करना चालू होने वाले हैं. एंड as soon as they try to plant, FiredUP Gaming will be hot on their heels. उनको इनफैक्ट उनको पोस्ट प्लांट पोजीशंस लेने भी नहीं दिया. Before they could even get back to safety, Ghost wiped up almost everybody and did not even let them plant. Yeah. So no plant for Blazing. Nothing other than one kill in the very first pistol round. Now Blazing have a buy. And now we're going to see what this buy can really accomplish. They've got AKs. FiredUP is still running the SMGs from the earlier round. It's only Ghost who's running an M4A1S. And it's again a hit towards A. It seems as if Ghost will make contact, but he'll be swiftly dealt with. Flicker gets 2 crucial kills. And it looks as if for now, Blazing have a numbers advantage. But Nox will shut that down. लेकिन ये जो MP9 है उन लोगों के हाथ में ये बहुत ही कम रेंज की थी. लकीली FiredUP Gaming ने जो ड्यूल्स लिए वो बहुत ही अच्छे रेंज पे लिए एंड नाउ दे हैव अपग्रेडेड टू 2 AKs एज वेल. फ्लिकर ऑलरेडी बी साइड पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बॉम्ब है वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है. सीक्रेट एंट्रेंस के द्वारा जाते हुए ब्लेजिंग के 2 प्लेयर्स स्टेज से नीचे उतरेंगे. उनके एक प्लेयर फ्लिकर ने ऑलरेडी बी साइड क्लियर करके तो रखा है, तो प्लांट करने में कोई दिक्कतें आनी नहीं चाहिए. लेकिन FiredUP Gaming, कैन दे स्टॉप दिस प्लांट वंस अगेन? पिछली बार तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल थे. विल दे बी हियर ऑन टाइम? They didn't get info of them going from outer towards the lower side. So it's going to be a retake of Ghost. Ghost doesn't have too much health. Ghost has been dealt with. It's now a 2v3. FiredUP Gaming in the afterplan. Champ though will pull it back. 2 crucial kills. He's almost done this single-handedly. Yellow Flash will manage to take care of Champ. And now it's the 1v1. Nox loses the duel. And Blazing put one on the scoreboard. Their Mapic nuke. And they're finally starting to bring things together. A 1v2 clutch from Yellow Flash. That's what you wanted to see. और अगर ये क्लच ना हो पाता तो उनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा तहस-नहस हो जाती. AKs इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा भारी होता है. And you can't recover from that, especially not with a 2-pointer loss bonus. I 100% agree. I mean, the number of rounds that you have, 12 rounds, is not enough to really make great comebacks. Your comebacks have to happen fast. For now, Blaze will take control of Hut rather swiftly, but can't proceed any further, Crips. Exactly, they can't proceed any further. At least the pick onto Rossi will help make things slightly easier. But the outer area is currently up for the taking. They can obviously exploit it. However, Blazing, उनकी tendency यहाँ पे जो inner area है वहाँ पे default करने का काम. What? Okay, I think this is probably because they want the round to be reset. Yeah. Okay. Don't worry, he did it on purpose. I had to be. आपसे कभी-कभी गलती में हो जाता है. जरूर. Still remember, हम लोग ने एक गेम खेला था. Sorry, वो आप नहीं थे, वो फ्लोकी थे. उनने मुझे गलती से 3 किल कर दिया था. मुझे अभी भी याद है. और बाद में जो हंसे थे आप लोग मेरे पे. Actually, हम उस पे हंस रहे थे, आप पे नहीं. अच्छा. अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तसल्ली देने के लिए बोल रहे हो कि सच में ऐसा हुआ था? नहीं. But yeah, we have a quick reset. I hope the technical gods are kind to us today. We proceed with minimum unnecessary interruptions so that we can get on with this CS2 best of 3, and then obviously we have an exciting set of BGMI TDM games to look forward to. TDM is always hype, and it's more hype when you've got your favorite influencers playing it.
For now, though, I'm just looking at FiredUP Gaming. They have enough in the bank to piece together a buy. I think Rossi has disconnected, and hopefully he should be back in the game soon enough. But Crips, you predicted a very easy 2-0. Are you still going to hold on to your prediction? I'm going to hold on to it with an iron grip. Okay. मेरा prediction in a lot of other games बहुत सही होता है. Of I course. hope CS में भी सही हो. Okay. I mean, back in the day, I was very good at this game. Obviously, since then, I've experimented with a lot of other titles, and coming back to CS2 feels good. Yep. Even Rossi over here has experimented with a lot of other titles. बीच में वो Valorant भी खेल रहे थे. And, he was one of the later ones to leave CSGO. Yeah, actually, वो CSGO में काफी टाइम तक डटे रहे. Yep. उसके बाद जब CSGO थोड़ा कम होने लगा सीन में, तब जाके उनने Valorant में शिफ्ट किया. लेकिन जैसे ही CS2 वापस आया, he came back within a heartbeat. Yeah. वो CS के लिए जो प्यार है वो गया नहीं उनके दिल से. Absolutely, and I think that love will also be reciprocated by organizers and brands a little bit more. I think we should see more CS2 tournaments in the Indian calendar here. I Yeah. think there's a lot more CS2 events coming up, and I think it's only good, right, that you have like one successful game already, or one successful PC title, and then you have another one. Exactly. The market grows, and it's good for everyone. Yeah. And if I'm not wrong, I think there's 2 more tournaments for Counter-Strike 2 coming up on the horizon. Oh yeah, Within the next couple I've of heard weeks. of one, Yeah. but yeah, good to know that there's 2 more tournaments, and But this obviously being the first CS2 LAN in India absolutely, will be a monumental one. absolutely. यहाँ पे ही इतिहास रचा जाएगा. Yeah, this is India's first CS2 LAN. This is the meta developing in front of your very own eyes. I can swear to God, I've not seen a video like this in all my time in CSGO. It is different. I think the videos are going to be really interesting as this game develops. I think Yeah. your map pool and what your default bans are really going to start to form, and of course teams and players have to start prepping and start familiarizing themselves with a lot of new maps. I So think it- the map, getting used to the map itself is not going to be a problem, but getting used to the way the nades work now will be a massive thing. Because, let's say for example, हम यही nuke की बात कर लेते हैं. वहाँ पे आपको वो वाला Molotov याद है जो heaven के ऊपर डालते थे to Yeah. prevent that smoke from landing over there, and वहाँ पे Yeah. one way बन जाता था. Yeah. अब one way smokes तो रहे नहीं इस game में. Yeah. तो आपको शायद वो स्मोक्स के आगे जाके खेलना पड़ेगा. इनफैक्ट वन वे स्मोक्स अब रहेंगे ही नहीं, राइट? बिकॉज वो अगर स्मोक मोलोटोव के ऊपर लैंड करता भी है तो इट स्प्रेड्स वेरी इवनली. Correct. पहले बहुत सारे ऐसे एंगल्स क्रिएट हो सकते थे. जस्ट लाइक यू एक्सपेक्ट स्मोक टू लैंड इन अ सर्टेन प्लेस, वहाँ पे आप मोलोटोव डाल दो स्टार्टिंग में ही, स्मोक अच्छी तरह से ब्लूम नहीं होएगा, एक छोटा सा कॉर्नर बन जाएगा, एक वन वे गैप बन जाएगा फॉर द सीटीज टू प्ले विथ. अब वो हो नहीं सकता. तो बहुत सारे पोजीशंस जो सीटीज होल्ड करते थे वो अभी नहीं होल्ड कर पाएंगे वही जगह से. तो आपको उस तरह से प्ले स्टाइल अपना बदलना पड़ेगा थोड़ा. वन वे स्मोक्स तो है नहीं, लेकिन जैसे कि आप स्मोक्स के एजेस पे फायर करके थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. हाँ. सिर्फ वही एक छोटा सा एक हल्का सा मैकेनिक है है जो जो अभी- अब्यूज हो सकता है, और कभी कभी एक्चुअली बहुत बुरी तरह से आपके ऊपर बैकफायर भी होता है वो मैकेनिक. या वो भी है. और ऑब्वियसली आप ग्रेनेड, एची ग्रेनेड फेंक के आप स्मोक को 3 सेकंड के लिए क्लियर आउट कर सकते हो. Yeah. ये सब बहुत ही यूनिक अप्रोचेस है CS2 में. अनफॉर्चुनेटली मुंबई का AQI पे यही स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है. It's been very polluted kind of couple of days. My goodness. But I haven't really seen any of these teams use the new mechanic of I the game, think the we'll see dissipating it. smokes. I see it in my pubs. I'm pretty sure we'll see it in these games. अरे pubs में अलग होता है. Pubs में you do it once or twice. You can't do it consistently to just literally abuse that tactic over and over again. It is still a utility meta. It's not. I mean, like I think जो tournament अभी चालू है सिडनी में, अगर हम थोड़ा और study करें, then I'm sure teams like Astralis and ENCE and all of them will be abusing smokes. But they're not even playing. I mean, FaZe is in the finals. Yeah, I'm sure FaZe will. I hope FaZe will. I think Carrigan will come up with something. I'm
pretty Has sure. to, no? I'm pretty sure. If there's one man who can do it, It is it's him. Carrigan. And are we back? It seems like we are back. Yes, ladies and gentlemen, let's go. We are starting again with CS2. Fired Up Gaming on defense, Blazing on the attacking side. And it seems like इस बार वो लोग एक आउटर पुश के लिए जाने वाले हैं. स्मोक्स की दीवार ले डाउन कर दी है, लेकिन फ्लिकर अकेले रैंप पे थोड़ी आवाज करने वाले हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो सीरीज को यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड रखे. स्मोक्स की दीवारें अभी बन चुकी है, बट होल्ड ऑन, आउटर से सिर्फ 2 टेररिस्ट जा रहे हैं. इनफैक्ट जो बाकी की 2 लोग हैं, दे आर स्टिल होल्डिंग लॉबी एंड फ्लिकर इज वेटिंग फॉर अ रैंप पुश. ये डिफॉल्ट एक हल्का सा चेंज हो चुका है ब्लेजिंग की तरफ से, क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सीक्रेट एंट्रेंस पे उतर चुके हैं और फायर्ड अप गेमिंग ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है. एग्जैक्टली व्हाई उन्होंने भी अपना एक प्लेयर को नीचे भेजा है. लेकिन व्हाइल आई से दैट, फ्लिकर विल पिक ऑफ रॉसी टुवर्ड्स रैंप एंड दिस शुड फैसिलिटेट द बी एग्जीक्यूट इवन फर्दर. Yeah, it is still a split of sorts. I mean, there is presence towards A, and Blaze, he's going to get picked off immediately. Fosky there with the trade, Champ bot down, but Nox is there on top of Hut, and he's going to ensure that there are no more leaks towards the A side, but the B side is where the madness is going to begin. Flicker, bit by bit, making his way towards ramp. There is one member from the CD side from down there. Nox will take care of Fosky, so the presence from Blazing rather towards A has been nullified, and now Flicker and Yellow Flash, they have to piece together around. Yellow Flash has clutched in the past, but this time he's going to get picked off by Ghost. The bomb drop, 27 seconds on the clock. What can Flicker do? He doesn't punish that. Ghost was reloading. That should have been an easy kill. And now he's got backup as well. People coming in from the doors as well. Fired Up Gaming, such quick adjustments. They did not even see any members of Blazing cross down in towards the secret entrance. उनने बस अंदाजा लगाया कि वहाँ पे पहुँच चुके रहेंगे because स्मोक की दीवारें पहली बार इस्तेमाल हुई है in the first 3 rounds. Yep. And based on that prediction alone, उनने एक player को secret entrance में नीचे भेजा near radio, and he was ready. That was really smart of them because they've actually not posted any player towards outer. They just have one player playing Heaven who's gathering information. Yeah. So based on his information and his calls, the rotation happens towards me. And I think that was really effective communication and play coming out from Fired Up. Good on them. They know how to play their CD side. Blazing really have to innovate a little bit more. For now, they don't have much other than a wall of smokes. They're going to attempt more of the same and try and make their way towards the B side, but it's not going to be easy. हाँ, लेकिन उनके पास ए पे यूटिलिटी डालने के लिए भी ज़्यादा बची नहीं है. जो भी उन्होंने डाल के रखी थी ऑलरेडी एक्सपायर होने को आई है. Meanwhile, Nox is playing inside the gap और ये सीधी डोर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल. घोस्ट और चैंप यहाँ पे उनको मोड आउट कर देंगे. बिल्कुल भी एंट्री लेने का मौका नहीं दिया ब्लेजिंग को. Yeah. Again, in a max round 12 kind of game, you want to win these anti-ecos. I think as this game and the meta develops, the teams that have strats for their anti-ecos, for their top buys, if they can really piece together wins on the back of a couple of deagles and light buys here and there, they're the teams that are going to go further in this tournament and in the meta and in the history of CS2, because there are going to be a fair amount of rounds where you're not going to have the money to really piece together a comeback. Now, Blazing, they're going to change their approach. They're going to go towards ramp. They're going to be blocked off by a smoke, and Rossi is there in person to deal with any sort of shenanigans. Why somehow smoke will get a kill? Let's go instead. Blazing have a numbers advantage. What do they do with this? This is the first time they acquire the numbers advantage and are still able to keep a lot of the utility as well. Last time उन लोग को ये man advantage निकालने के लिए बहुत ज़्यादा smokes expend करने पड़े थे. इस बार at least उनके पास 2 flashes बचे हुए हैं, लेकिन उन्हें जो smokes already डाल के रखे थे वो खत्म होने वाले हैं. So their window to make this execute work is about to come to an end, and they don't check. ऊपर एक caller आ चुका है. Finally Zodiac की तरफ से trade. A side पे अंदर entry मिल चुकी है, and now the plant will go down and nobody to deny it. First time a successful plant has happened. And Fired Up Gaming, they need to make a move. उनके पास पैसा काफ़ी है, so save करने के लिए नौबत नहीं आएगी यहाँ पे. But Ghost is already low, तो यहाँ पे जो करना है, Rossi को करना पड़ेगा. Rossi, his work cut out for it in this 2v2. Needs to deal with Fosky, gets undone by Galil, and now it's Ghost with 16 points of health, a smoke and a Molotov. He's doing damage to Zodiac, but Fosky still strong towards Vents, gets the kill, and Blazing put their second round on the scoreboard. That's what happens when you play slow and steady, and finally Fired Up के overextension का मौका मिला Blazing को.
I wouldn't even call it overextension actually. I think he was just going for a regular information peak. Yeah. क्योंकि blazing बहुत ज़्यादा default पे खेल रही थी. So I wouldn't exactly call that overextending. That was my bad. लेकिन फिर भी blazing की patience को finally कुछ fruits मिले. अब तक वो जब भी default कर रहे थे, FiredUp would literally not even give them an inch to work with. It's also Yellow Flash. Yellow Flash with the clutch earlier on, and this time Yellow Flash finding the opening, finding that pick off through the smoke. So all these things, all these individual moments from Blazing are really helping them. For now, Rossi's been pushed back from ramp. It is a hit towards the B side. How much longer can he delay this? And Yeah, I mean, they can delay this as much as they want. उनको RAM control already मिल चुका है. लेकिन इस RAM control से तो वो लोग heaven पकड़ के A भी जा सकते हैं. And it seems like the plan because Zodiac and one of his teammates, I think Farsky, are still waiting near the lobby, waiting for that A hit to come around. But FiredUp Gaming, they're putting all their eggs in the other basket. And that basket is labeled B. उनके 3 players already underground पहुंच चुके थे. Finally, when there's no hit coming, they start to suspect कि शायद वो लोग का अंदाजा गलत रहेगा, and that's why they're trying to come back up again. And Ghost, he will just catch them off guard. Blazing thought they knew what they were doing. They thought that they will be able to surprise them by coming in from heaven. And now their surprise is turned against them. Champ with a double kill of his own does not get traded at all. Blazing, I mean, Rossi gives up ramp, and then Blazing decide to go A to, I mean, basically ramp to heaven. Ramp to heaven, yeah. They took too long. That was the issue. I mean, they had to shift walk throughout ramp. They weren't sure if there was anyone close ramp and whether they were giving away any information. By the time they slowly shift walk at 10 frames per second, the backup and the reinforcements had arrived, and FiredUp were there to shoot them caught looking sideways. Now, Blazing, their economy reset, a couple of Tech 9s to work with. Again, it's Yellow Flash, the man that has to really piece together magic for this T side as they're just running down towards the B side. Exactly. And this has been spotted by FiredUp Gaming. They must adjust immediately. उनको already players नीचे इंतजार कर रहा है उनके लिए. Meanwhile, Nox, he was a little late to rotate, and he was correct for doing that because the one person who comes in to fight him is actually trying to sell the fake. वो vent से जाने की कोशिश कर रहा था. So now that the vent execute has been shut down, सिर्फ secret entrance बचा है Blazing के लिए, और वो भी already पता पड़ चुका है FiredUp Gaming को. So their options are running out. They might be in towards the vents, they might be in towards the secret entrances, but they can't get to the site. And now they must look for another way in. Or perhaps another way out if they want to save whatever guns they have. Zodiac has an AK. Oh no, Ghost is still watching that area. Opping all the way from up top. And Ghost delivers yet again. I mean, Zodiac did manage to pick up an AK in that round, but he couldn't do too much with it. Phenomenal setup. I mean, really well-played setup coming out from the side of FiredUp. A big hat tip to Nox for having the discipline to not drop down vents, for being patient and cutting the late lurks coming out from Blazing. Yep. No late presence towards A is really catching FiredUp mid-rotation. They're not overreacting to the wall of smokes at A. They have one player from ramp who makes the adjustment. So if Blazing need to look for any sort of punish, it is by running an outer execute, and it is by catching the player ramp snoozing. That's what they need to exploit. That's the weak link in the FiredUp setup that they should look to poke at. For now, Blazing have a bye 6-2. Another 5, what? 9, 3, 10. Wait, just 4 more rounds to go. Yeah. Good thing you caught up on your math. I am an art student. I think so are Blazing. However, this wall of smoke goes up once again. But will they commit here? I think वो लोग सिर्फ यहाँ पे smokes fake डाल के ramp जाने की कोशिश करने वाले हैं. Will FiredUp actually catch on to this one? Yellow Flash on a solo expedition cross करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो nade से छोटी सी gap बनी थी, उसमें कोई उन्हें दिखा नहीं. And this should confirm FiredUp Gaming suspicions, especially with Ghost opping towards ramps. He will have a monumental task on his hands. Farsky finally picks him off, and that clears up the pathway. But Champ, he's doing all the work by himself. जो भी मेहनत Farsky ने की थी, वो सब पानी में चली गई. Beautiful work coming up from Champ, and Ghost with the AWP getting 2 crucial kills with the op, shutting down the aggression towards ramp. Yellow Flash halted in his tracks, couldn't do too much, and now Flicker with an op, and
Eventually, he's going to be hunted. He misses his first shot. He's got to look at the left. He's got to look at the right. He deals with Champ. Can he find another? He drops his AWP, waves the white flag, and runs down towards ramp. Picks up an AK, and now he'll try and reassess his options. Ghost, Rossi, and Nox, and Flicker all by himself with 37 seconds on the clock. Plenty of time. Not enough HP, not enough util, and definitely not enough men. He is better off saving, but उसने footstep दे दी और इससे अब FiredUp Gaming को पता पड़ गया वो कहाँ पे है. FiredUp Gaming नहीं चाहते कि वो लोग ये ऑप सेव कर पाएं, and that's why they will want to hunt down Flicker. I mean, even if FiredUp lose their members in the process of this hunt, it's completely fine. They have money for days. FiredUp Gaming के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये ऑप ब्लेजिंग के हाथ से छीन के बहुत ही करारा झटका दिया है उन्हें. Of course. Ghost did have an AWP at the beginning of the round. He was holding towards the box at ramp, and he did get a very crucial kill initially. So And both the Ghost players are actually now sniping. 2 Ghosts, 2 snipers. Good luck getting through any of this defense. Yep. Oh, it's a fast one. A barrage of flashbangs followed by the Tech 9s raining through. But these M4s are mowing them down like mincemeat. Jeez, that was brutal. Yeah. 10 seconds and the round is over. That's how I like my anti-eco. Short and sweet. Just get done with it, because there's not much that can be done sometimes. I really liked it. Flash and hit A. To hope to catch FiredUp by surprise. It's a welcome change of pace. I hope Blazing bring this into the next buy round as well, which is this round, the 10th round. I'd really like to see them change up the pace. This is this slower style where they're waiting to find some sort of action towards ramp is not working for them. We need to see a change. For now, they're trying to contest Ghost, the younger Ghost in the off, and it's Champ who's still delivering, still reliable with the aim for A1S. A 4v4. Blazing can still do it. Fast Guy has been very consistent in all of his entry trades, but now Yellow Flash with a longer flank from outer will finally deliver. He's got a Predator on his back, but he can't deal with the one in front as well. Champ is an absolute monster right now. No comms, only firepower, and there's only one person who could have probably saved them, but that hero will go down in flames. Ghost strikes once again. Ghost strikes again, and Blazing, I mean, their economy is a bit broken, Crips. Yep. Beyond broken, actually, it's beyond saving. They're in despair. Not a single one of those people has positive death ratios. Meanwhile, FiredUp Gaming, they not just have money for days, they have weaponry, they have utility, they have frags and firepower for days. Blazing stands up with a good chance in this situation. Nice flash. Oh, the go to go back is just nervous. He can't follow up. He already did a lot of damage. He can't get those kills. Meanwhile, on the outer side of things, FiredUp Gaming यहाँ पे बहुत aggressive जाने की कोशिश कर रही है. Ghost playing towards red. Sniper के साथ बहुत ही risky हो सकता है, लेकिन he delivers it again. Close range, far range. This guy doesn't care. Doesn't indeed, but he's got Wonder Child on the other side of the map, causing trouble. But eventually, if you just look at it, it's just Fasky and Blaze. They haven't got the bomb. It's just Fasky all by himself on the A side with the Galil. How much can he do? Well, he'll deal with Nox. He's pulled it down to a 1v2. It's still possible for Blaze. A miracle of sorts is required. The Flash will push back one of the uppers, but... And that's the half. 10-2. One-sided domination देखने मिल रहा है यहाँ पे FiredUp की तरफ से. It has been a very one-sided affair. The 2 rounds that Blazing won were on the back of individual heroics. It felt like they didn't have much of a T side that really contested the setup that FiredUp were running. FiredUp, if they win their pistol, this is going to be a very quick map 1. Exactly. And I think वो pistol तो जीत ही सकते हैं. I kind of feel like Blazing यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं पाए. जब भी वो लोग आउटर एग्जीक्यूट्स करने जा रहे थे, उनने स्मोक्स की बरसात की, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाना चाह रहे थे, FiredUp Gaming was always a step ahead. उनका already एक player नीचे रहेगा, waiting for them near the bottom of stairs to intercept. अगर वहाँ पे नहीं तो decon room के अंदर तो बैठे ही रहेंगे. And that way, even when they tried those outer executes, Blazing की तरफ से वो काम नहीं कर पाए.
At the same time, जब वो लोग lobby hold कर रहे थे, they were just waiting for someone from the side of FiredUp Gaming to come and explore, to see क्या हो रहा है. लेकिन FiredUp Gaming को कभी aggro जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वो लोग अपना default hold करते गए. It kept on working. No changes required whatsoever. Yeah. सिर्फ 3 variations देखने मिले हमें Blazing की तरफ से. और तीनों की तीनों variations काम नहीं आए. Yeah, I think the only adjustment they made was putting an op at ramp. I think Ghost just moved around a little bit, but yeah, FiredUp didn't need to make too many adjustments. Initially, that one player on top of Hut had to readjust, but that's about it. It was a very easy round, a easy half in a sense for FiredUp Gaming, and now in a 4v4, they're moving down. Ghost delivers. Whoa, yeah, Ghost does deliver, but hold on. That was just a ruse. You have one guy jumping out of the ramps directly, और उसके रिस्पॉन्स से ब्लेजिंग का ओवर रोटेशन देख लीजिए. वो वेंट्स के अंदर पहुंच चुके हैं. चैंप अब प्लांट तो कर रहे हैं, लेकिन घोष ने वो ट्रैप पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है. उन्हें मालूम है कि जो 2 प्लेयर्स वेंट के अंदर है, अब वहां पे ऊपर नहीं आ सकते. ब्लेजिंग को घूम के जाना पड़ेगा, and this will waste so much of their time. Yeah, they'll eventually have to come from outer, and they're walking. They don't have defuse kits. Well, they've got aim, and now they've got the numbers as well, as Zodiac will pull back with another quick kill. It just goes to Nox, goes in a corner towards Wen, has got Nox for the trades. Nox with the trades ensures that FiredUp win the pistol. It was getting a bit hairy for a moment, but FiredUp will pull through. They've won the crucial pistol. If they had lost that one, sure, you could say Blazing had a very good chance of coming back in this half. Now, they have to pull out a too easy, basically, Crips. They have to pull off a too easy. Blazing already एक बहुत बढ़िया comeback करके इस फाइनल में पहुंची है. They were down 111 against their previous opponents, and from there they mounted a massive comeback. Is that possible now, though? एक Galil. Actually, sorry, काफी सारे weapons हैं. Galil is all over the place. लेकिन Fars guy with that USP, nice shot. Ghost ने उन्हें मार दिया है, but he's gonna continue fighting over here by himself. Rossi hasn't revealed his position yet. He's just outside the sneaky doors. Meanwhile, Champ, who was trying to go all the way around from hell, will be taken down. These MP9s are actually working, Vivek. Flicker with a double, and he's retrieved the AK, and that leaves Rossi by himself. He's been discovered, but he's surrounded on all sides. Can he actually do this one? No way. Blazing actually are in this game. They are still alive and kicking. They are. FiredUp doesn't have a buy. Blazing got a huge number of kills, and they retrieved a lot of those AKs and Galils, if I'm not mistaken. So Blazing feeling quite comfortable after that round. They've got enough in the bank to at least hold out for another couple of rounds. It remains to be seen what FiredUp can do when they are short on resources, when they're short on utility, when they're short on weaponry. Just a couple of Tech 9s, a play towards the outer part of the map. They spot a player and goes, yeah, blinded, gets the kill. They're just going to run down to B Crips. Yep, fast rush from Secret down towards B. अच्छे नेट से डिसिपेट हुआ था स्मोक, लेकिन चैंप अननेसेसरीली वहां पे चैलेंज करने के लिए रुक गए. कोई बात नहीं, उनके प्लेयर्स ऑलरेडी बी साइड पे पहुंच चुके हैं, तो ये इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. येलो फ्लैश अभी भी लॉबी पुश के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फ्लिकर जो बहुत टाइम से नीचे छुप के बैठे थे, अभी उन्हें फाइनली स्ट्राइक किया. नॉक्स के टेक ने फाइनली दावा बोला है, लेकिन इस 2v2 सिचुएशन में प्लांट करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये दोनों अटैकर्स एकदम सेपरेट हो चुके हैं. एक प्लेयर जो अभी है डीकॉन रूम की तरफ जाएंगे, लेकिन दूसरा जो ए साइड पे ऑलरेडी आ चुका है, अब वेंट से नीचे कूदेगा, एंड दे बोथ गो अप विद द वेंट्स. FiredUp गेमिंग ने ब्लेजिंग को बैम्बूजल कर दिया है, और दोनों सीटीज अभी नीचे की तरफ फंसे हुए हैं, जबकि प्लांट हो रहा है ए पे. घुमा दिया उंगलियों पे. Beautiful stuff coming up from FiredUp Gaming. They literally played Blazing on the map, Blazing in a game of hide and seek that they've lost, and now got a mount to retake. Now a 1v2 retake, and that actually Flash is dead. It's just Zodiac now in a 1v1. Can Nox do it? He's got just the Tech 9 up against an MP9. He's running, wants to buy time as much as possible. Zodiac, he's got himself a defuse kit. Nox has got to respect that. The defuse now coming through. Nox pushes back Zodiac, when Zodiac turns with the MP9, wins the duel, and wins the round for Blazing. It was close. It was close, but no cigar for FiredUp Gaming. Incredible stuff. The spirit kept alive. This team kept alive. ये राउंड अगर हार जाते तो मैप पॉइंट हो जाता ऑलरेडी टीम FiredUp के लिए.
लेकिन फिर भी विवेक याद रखना ये एक इको राउंड था और इको राउंड में भी फायरअप को प्लांट मिल गया 2v2 सिचुएशन में वो कन्वर्ट ऑलमोस्ट कर चुके थे। तो ये राउंड जीते तो सही ब्लेजिंग लेकिन बहुत महंगा पड़ा उनके लिए। Yeah, that was a moral victory, but despite that, FiredUp Gaming, they're not going to have a buy moving into this round. Can they pull off heroics with a very soft buy yet again? यूटिल प्लेसमेंट फायरअप गेमिंग की तरफ से ज़्यादा आया नहीं है फिलहाल के लिए। ब्लेजिंग ने 2 मोलोटॉव्स इस्तेमाल किए हैं, एक इनर की तरफ और आउटर की तरफ शायद एक नेट डाला है, बस उतना ही किया है फायरअप गेमिंग को रोकने के लिए। लेकिन वंडर चाइल्ड, आर यू सीरियस? ही पुशेस अहेड ऑफ द स्मोक। ओके, फाइनली ट्रेड निकाल दिया है। एक आईजीएल ने दूसरे आईजीएल को मारा एंड बैक टू अ 4v3। लेकिन फार्स्काई ही इज एक्चुअली डूइंग वेल। फ्लिकर ने बहुत अच्छा ट्रेड निकाला है एंड द स्प्रे ट्रांसफर इज कंप्लीट। रैम्प डिफेंस पूरी तरफ से हो गया एंड रॉसी ने दरवाजा खोलते ही मुंह पे एक गोली खाई। That's a good enough round for Blazing. उनको ये बहुत जरूरत थी और उन्होंने ये क्लीन भी रखा है। कोई भी प्लेयर ज़्यादा मारा नहीं गया, सारे गन्स अलाइव है, इकोनॉमी हेल्दी है। Now they can actually put up a fight, विवेक। शायद यहीं से उनका कमबैक शुरू होएगा। Exactly. This is what Blazing needed after losing the pistol. This is the exact series of events that would piece together a comeback for them on their CT side, on their map pick, mind you. This is their map pick. So Blazing, it is do or die. They win this, they're once again really going to hurt FiredUp in the economy department. Let's see what FiredUp do with the proper buy. आउटर की तरफ स्मोक्स डाल के सीक्रेट की तरफ एंट्रेंस ले लिया है फायरअप ने, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर्स को भेजा है। बाकी के 2 प्लेयर्स रैंप से क्रंच करने की कोशिश करेंगे एंड वन इज स्टिल होल्डिंग डिफॉल्ट। घोस्ट यहाँ पे साइलो के ऊपर बस प्रेजेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ब्लेजिंग के वेंट वाले प्लेयर्स नीचे उतरेंगे, दैट्स व्हेन घोस्ट विल स्ट्राइक। बट विल दैट एवर हैपन? द आईजीएल रॉसी इज डाउन, द बॉम्ब इट्स येट टू बी फाउंड। सो एटलीस्ट ब्लेजिंग को एक विन कंडीशन नहीं मिली है तब। Yeah, Rossi's down and Blaze is getting a lot of information. I mean, FiredUp, they have made progress across the map. The good news is they still have the bomb, but they haven't gotten onto a site yet. It's Nox towards outer that's really got to make this magic work. They need to find a kill, but at the same time, they've got to respect this lurk coming out from Blaze. Oh, he got them. He's had them. Nox looking the wrong way. The bomb dropped in outer. This round is going from bad to worse to utter garbage for FiredUp Gaming, because if they lose the scripts, they're not going to have money. They won't have money and शायद इसी से Blazing का comeback actually शुरू होएगा। Nice kill onto yellow flash. घोस्ट ने ये ए पे पिक निकाल के थोड़ा काम इजी कर दिया है, लेकिन Blaze is holding the red. That's insane. Wow, both the ghosts getting 2 kills at the same time. Now this will really start things. It will kick it into high gear. Plan करने की opportunity available नहीं है। दोनों players heaven पे चढ़ चुके हैं। Flicker उनकी तरफ देख रहे हैं and here comes Chap. He dives upwards, chasing them from behind, and there's no frags available. Great attempt, लेकिन फार्स्काई और फ्लिकर दोनों ने मिलके ब्लेजिंग को अपने पैरों पे खड़ा रखा है अभी तक। It was amazing. I mean, both the ghosts single-handedly tried to win that round for FiredUp Gaming. They almost got the plan. Unfortunately, time was not on their side. Blazing just pushed them. They know that they have the advantage in that round. They know that FiredUp have to stick the plan, and they push them. They win the duels and they win that round. Kudos to Blaze from Blazing. He really pushed and got a lot of valuable information for his team. He brought down Nox, who had the bomb, and single-handedly started to piece together that round for FiredUp Gaming. FiredUp Gaming started out okay, but mid-round their adjustments were a bit questionable. You know, they move on towards the B site from outer with their wall of smokes, but then what they want to do after that is a little unclear. Also, Rossi died at the beginning of the round. I don't think you want that if you are a FiredUp supporter. I'm completely okay with them taking a tactical timeout, just reassessing their options, looking at how they want to play their T side on Nuke, because other than the first round, there's a lot that remains to be seen from FiredUp on their T side. अरे FiredUp ने तो अब तक हमें कुछ दिखाया नहीं है। उनका स्प्लिट देखिए किस तरह से बहुत अलग है फ्रॉम द स्प्लिट पुशेस जो ब्लेजिंग कर रहे थे। जब FiredUp अपना पुशेस करते हैं, वो लोग सीक्रेट में बहुत जल्दी कंट्रोल ले लेते हैं, काफ़ी जल्दी उनको अंडरग्राउंड कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो पहले सीटीज के रोटेशन का इंतजार करते हैं। और जब वो रोटेशंस नहीं आते तब जाके वो खुद अंदर घुसते हैं। मे और मे नॉट वर्क आउट ऑल द टाइम,
I think the major win condition, the main reason जिसके कारण Blazing ये वाला round जीते was their IGL. जिस तरह से उनने flank किया. Blaze himself stepped out, पूरा lobby clear out करते हुए T-spawn की तरफ से outer की तरफ गए, backstab किया, bomb drop करवाया, और वो bomb recovery के चक्कर में ही बहुत सारे util हम लोग को, I mean, FiredUP Gaming को expand करने पड़े. Yeah. And because of that, there were barely any smokes available for them to plant. वो B पे जा पे वापस भी re-clear कर नहीं पाएंगे, right? They just recovered the bomb from mini garage. अगर वो लोग वापस B की तरफ जाएंगे, they don't know if there will be any CTs waiting for them over there. Re-clear करने का time नहीं है, resources नहीं है. आपको risk लेके A पे plant करना ही पड़ता. और वो risk obviously did not pay off. Yeah, I think one small adjustment that maybe FiredUP want to do is if they go B, maybe try and explore vents a little bit. Yeah. And have the CT split between B and A by just Yeah. taking control of vents and maybe. Even if they don't take control of vents, right? अगर वो लोग एक player को squeaky के बाहर खड़ा रख देंगे, Yeah. just to start spamming when somebody tries to rotate via vent, Yep. that itself is enough. Yep. This will force the CTs to go all the way around ramp. Yep. And उससे बहुत ज़्यादा pressure बन जाता है time का. Well, FiredUP, they do not want one versus in one round on their D side. This time they have a bye. After this, it's not going to be too pleasant. Let's see what they do. They're going to be patient, wait for the smoke to dissipate at ramp, take their time. They have no presence towards outer, but they do have one man who has snuck down towards the lower side. Am I reading the minimap correctly? Yes, you are absolutely. Secret पे I think knife होने वाला है, bro. He's following him for so long and he actually knifes him. No way! The IGL of Blazing just knifed one of his primary opponents, and that is a humiliating thing to happen on such a grand stage. But hey, as soon as that knife happened, the fury of kill feeds that come in through over here is absolutely insane. There's so many attacks happening. Oh my god, Nox pulling out the molly at the wrong time. He sets the floor ablaze, but at the cost of his life, and that doesn't really pay off. Yellow Flash holding his ground, taking names and kicking ass, still standing strong. Finally goes down to Rossi, and now it's down to a 1v2. The captain of FiredUP Gaming now must step up and redeem his fallen soldiers. Redeem whatever happened to Ghost. Well, the good news is he has the bomb. So he can just go plant. He's Molitor of access towards vents. He knows exactly where both players of Blazing are. This is a very winnable 1v2 Crips. Absolutely nuts. Far Sky Heaven पे जाएंगे. Rossi's expecting this, but he doesn't know where the other player will come from. Oh, now he knows. Down आ गया, and he knows where the other one is. Isolate हो गए दोनों frags. Timing भी था, लेकिन वो shoot नहीं कर पाए. Far Sky 13 HP पे survive करके ये clutch कर जाएंगे. And Far Sky again and again stepping up for his team. Far Sky and Flicker के कारण ही Blazing इस मुकाम पे पहुंची है ताकि उनके पास 7 rounds आए. अगर ये दोनों players नहीं होते, शायद ये game बहुत पहले खत्म हो चुका होता. Yeah, Fast Guy and Flicker, sure. I mean, Blaze did get the knife, and that's the sweetest $1,500 you're ever going to get in CSGO. But it is Fast Guy, Flicker, and to an extent Yellow Flash, in my opinion, who really had the impact and the impact flags. FiredUP Gaming, they still have a bye to work with, not too much in terms of utility. They kind of get stuck in these smokes and do not make much progress afterwards. This time they're going to try and flash his Ghost running in, causes havoc and chaos, gets the kill. It's only Japs that lost so far, but it's a 1v1 now. What? And way quickly, No Fast Guy way. will pull it back as he clutches it out. One Ghost enters and one Ghost exits at the beginning and the tail end of that round as FiredUP kind of feel a bit frustrated, Crips. It feels like they're hitting a wall, and it feels like Blazing are nearly pulling off for too easy here. Exactly. I mean, FiredUP Gaming had everything working for them. The flashes were perfect. Nobody from Blazing was playing that anti-flash position. सारे frags उनको मिल ही गए थे. लेकिन बाद में Far Sky का triple spray down. Absolutely nuts. I just wish we could have seen that on camera. Fast Guy is going to be playing towards Vent. FiredUP Gaming do not have much to really break the squeaky door, and Champ gets picked off through the smoke elsewhere. Yeah. And this is a bit weird because
ब्लेजिंग खुद सीक्रेट की तरफ अर्ली कमिटमेंट दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फायर टू टेक देयर मूव एंड स्मोक फेड होते ही ब्लेज के आईपीएल ने वापस एक बार स्ट्राइक किया एंड ही हैज गॉट वन मोर प्लेयर कॉर्नर्ड ओवर देयर लेकिन उन्हें मैन एडवांटेज मिल गया है तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये फाइट चैलेंज नहीं करूंगा आई विल फॉल बैक अब बॉल है फायर्ड अप गेमिंग के कोर्ट पे फ्लिकर को यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा घोस्ट को मार गिराया है लेकिन द अदर घोस्ट नॉट रेड हिम एंड व्हेन ही स्विंग्स द टेक 9 एक्चुअली वर्क्स 2v3 it's still winnable he doesn't get the weapon doesn't upgrade but he's got the bomb and he might just be able to plant अगर ये plant मिल गया तो at least fired up gaming को पैसे मिल जाएंगे oh no he doesn't stick the plant उन्हें लगा कि फार्स का उन्हें स्विंग करेंगे डीकॉन डोर पे ऑलरेडी दो लोग आ चुके थे he knows he's surrounded he knows he doesn't have anywhere else back to go and now he's just waiting for someone from Blaze to offer him a fight and they offer it he almost wins out the second one as well Ghost very good attempt लेकिन फार स्काई और उनके चर्चे रुक नहीं रहे यहाँ पे This is sheer domination coming up from Fast Sky. It's Fast Sky for days, Fast Sky with the M4A1S. Him and Flicker are really putting in the work on the CT side for Blazing. And Fired Up Gaming, they've got a buy. I think this is their max loss bonus scripts. So I think the gods of illogical CSGO economy are blessing them because if they didn't have anything to work with, I'd be really concerned. But YF through the smoke gets knocked. Fired Up Gaming, it feels like they've lost inspiration on their east side. What? But just as I say that, Rossi through the smoke, one kill, then another. YF, the yellow flash, this time not fast enough. Not the real Hokage there, as Blazing find themselves in a 3v4. For the first time, a numbers disadvantage. Fired Up should, on paper, be able to put together this round. They've got a flash, 3 flashes, a molly, and a frag grenade. यूटिलिटी तो काफी है फायर्ड अप गेमिंग के पास वो अंदर जाते ही ड्राई पीक ओके एटलीस्ट ट्रेड कर दिया है कैप्टन ने 3v2 बॉम्ब पास करके रॉसी खुद प्लांट करने की कोशिश करेंगे मीनवाइल डीकॉन रूम खाली है जो भी अटैक आ रहे हैं वो यहाँ रोड से आएंगे ही एक्चुअली मैनेजेस टू गेट दैट किल देयर वाज यूटिलिटी ऑन हिम लेकिन फिर भी कवर नहीं दे पाए अपने कैप्टन को एंड नाउ ज़ोडियाक नोज वेयर बोथ द लास्ट प्लेयर्स आर Zodiac has got himself a smoke grenade to work with. No kit, however. Gonna tap the bomb. Waiting for Ghost. Ghost spams in through smoke, but wins. And Zodiac finds the other. Oh, Blazing winning rounds. They have no business winning. Fired Up. That should have been your round. How? No way! Bro, I want a replay. I want a replay now. What was that spray transfer? First kill, understandable. सामने सामने आ गया उसके. He actually saw him. Bro, he just flicks 90 degrees. Through the smoke. Through the smoke. Absolutely nuts. Well, Blazing are feeling themselves, and you can see Rossi is trying to get his team to mentally reset. I mean, the past 8 rounds have just been one repetitive outcome for Fired Up Gaming. Loss and loss and loss again. And heartbreak. दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ. 100%. Well, this time it is an approach that is just being a bit more split across the map. हाँ लेकिन स्प्लिट पुश से उनको अर्ली मैन एडवांटेज और कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं प्रॉब्लम उनकी पोस्ट प्लान सिचुएशन में शुरू होती है सीन ये है ना कि ब्लेजिंग हमेशा अपने पोस्ट प्लान के पाथिंग चेंज कर रहे हैं स्पेशली अब फारस्काई जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी सीक्रेट में जल्दी घुस के प्री पोजीशन ले लेते हैं देयर इज barely any पोस्ट प्लान स्पॉट्स अवेलेबल फॉर फायर्ड अप Yep. ओह नाइस शॉट फारस्काई पीक्स आउट ऑफ सीक्रेट घुस ने उनको मार गिराया है एंड दैट्स द प्रॉब्लमैटिक प्लेयर आउट ऑफ द इक्वेशन अगर ये राउंड फायर्ड अप गेमिंग कन्वर्ट नहीं कर पाती है तो और कोई राउंड कन्वर्ट नहीं कर पाएगी Well, it looks as if Blaze is more than ready to step up. Sure, Fastka is not there, but he'll take over, he'll equalize. And with this round and 45 seconds remaining in this round, Blazing have a very good chance of equalizing the score as well. Lower seems rather unthreatened, but Fired Up Zodiac looks player. away. Oh, he's stuck into heaven, and he gets 2 crucial kills. No Zodiac way. as well as Yellow Flash dead. Rossi is now planting. It's a 4v2. You question their after plant scripts, but this one shouldn't go wrong. This one should go as per script. If somehow Flicker and Blaze manage to pull out this one, I might drop my mic and go
go home. And there's no chance of that happening. Fired Up will take care of Blaze. It's just Flicker in a 1v4. They kind of know where he is. They are hunting him bit by bit. Fired Up, they found their mojo yet again with their first really important round on their T side coming together for them. They are sitting at map point. Map point, finally. 10-2 का हाफ था विवेक. 10-2. 10 राउंड लगातार जीते हैं ब्लेजिंग ने यहाँ पे. सॉरी 9 राउंड्स, माय बैड. एंड ये सब के बावजूद ये राउंड में ऑलमोस्ट ब्लेजिंग के जीतने का चांस था. फ्लिकर हेवन मार्क कर रहे थे. उनने 1 सेकंड के लिए अपनी नजर वहां से हटाई और उसी मोमेंट पे हमीद ने आके उन्हें मार गिराया. अगर वो 1 और सेकंड अपना पोजीशन वहां पे होल्ड कर लेते, शायद ये राउंड का आउटकम बहुत ज्यादा गलत होता. So this is what I was talking about earlier when I felt like Blazing should have split their attention between outer and lower. So the one player here that really managed to sneak in through heaven and did it effectively and lurked and timed his lurk effectively was Ghost. So exactly he exploited that weakness really he well. exploited the weakness. लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्लेजिंग को अंदाजा ही नहीं था उसके पोजीशन के बारे में. उन्हें मालूम था कि आउटर लीक हो चुका है. अगर वो लोग आउटर से सीक्रेट नहीं गए हैं तो एक ही जगह है जहां पे वो आ सकते हैं एंड दैट विल बी हेल. Yes. तो वो पोजीशन मार्क भी थी. लेकिन कभी-कभी बोलते हैं ना, जब नसीब आपके साइड पे नहीं होता है तो कुछ नहीं हो सकता. फ्लिकर को पूरा अंदाजा था कि घोस्ट वहां से आ सकते थे. उनने बस 1 सेकंड के लिए नजर हटाई और उसी सेकंड में दुर्घटना घटी. मैप पॉइंट फॉर FiredUP गेमिंग. बहुत कठिन सफर रहा है. फ्रॉम 10-2 टू 12-10. उनका मेंटल अभी बहुत ही ज्यादा नीचे रहेगा एंड दे नीड टू फिनिश दिस ऑफ. नहीं तो ये गेम ओवर टाइम भी जा सकता है. सिर्फ मैप और नहीं क्रिप्स, अगर आप ब्लेजिंग का इकोनॉमी को थोड़ा ध्यान से देखिए, उनके पास कुछ है ही नहीं बाय करने के लिए. एग्जैक्टली. फास्टकाई के पास एक M4A1S, बट बाकी के प्लेयर्स सिर्फ 3 प्लेयर तो पिस्टल के साथ खेल रहे हैं और जोडियाक के पास एक SMG बस. 3 पिस्टल, एक SMG, एक छोटा सा ख्वाब. That's all that Blazing are working with. The P90 comes out. The IGL is desperate. And I think if I was in his shoes, I would be too. And he's ready with the P90 towards ramps, the one place where it can mow everyone down. FiredUP को भी मालूम है कि ब्लेजिंग शायद इस बार फॉरवर्ड खेल सकती है. उनके पास इकोनॉमी नहीं है. उन्हें मालूम है कि ब्लेजिंग के पास सिर्फ टेक्निक्स का बोल रहा हूँ 5.7s एंड योर P250s एंड SMGs रहेंगे. तो उन्हें भी मालूम है कि ब्लेजिंग को क्लोज खेलना पड़ेगा. And that's why they're waiting. Timing once again, pushing through the gap. लेकिन रॉसी इस बार वो उनके लिए तैयार है. And Jam goes in for follow-up. सिर्फ फार्स्काई बचे हैं. The top fragger of Blazing now alive. He gets 2. He can actually convert this as well. लेकिन Ghost finally ये मैप जीत जाएंगे. FiredUP Gaming win map number 1. Putting up the fight of their lives, but FiredUP Gaming are going to take map number 1, and this is Blazing's map pick, mind you, Crips. This is them losing Nuke. They're going to be moving on to Ancient, which could be really unfamiliar and uncomfortable territory for them, and anything could happen on that. Exactly. I mean, जिस तरह से हमने यहाँ पे comeback देखा था, I would say half of it is because Blazing is very adamant on their strats, and half of it is because FiredUP Gaming were overthinking. They are used to a level of opponents जहाँ पे अगर आप कुछ करते हो, होता actually कुछ और है. लेकिन यहाँ पे Blazing was playing in a very straightforward way, and I think sometimes because of overthinking, they started to doubt themselves, and they started to move away from positions जो उन्हें reinforce करके रखे थे, which was originally the right call. Yep. Well, it looks as if we have our man Sarthak on stage, who's got a quick interview with the boys over at FiredUP. Over to you, Sarthak. Thank you so much, Vivek and Crips. And what a first match. What a contest between Team Blazing and Team FiredUP. These guys took 9 straight rounds, and still in the end, somehow Team FiredUP found a way. वैसे एक चीज तो आपकी माननी पड़ेगी, आप लोग को मजा आता है नीचे से ऊपर आने में. 9 लगातार राउंड कौन कह सकता. सेम चीज आपने सेमीफाइनल में की थी. इतने करीब आए, लेकिन ये बेस्ट ऑफ 3 है. ये बाहर नहीं हुए हैं. दिस इज अ बेस्ट ऑफ 3 और पहला मैच गया है टीम FiredUP के नाम. लेट्स हियर इट फॉर टीम FiredUP. सबसे एक्सपीरियंस रॉसी आइए यहाँ पे.
आप बताइए, एक पल के लिए तो आपकी टीम थोड़ी वहाँ पे ऐसे लगा कि जो रणनीति स्ट्रैटेजी थी उसमें शायद मे बी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। आप क्या कहोगे, किस जगह पे कमी रह गई थी जिसके वजह से वो इतना अच्छा कमबैक कर पा रहे थे? So the thing is, it's our fault. We started playing more individualistic because we started winning so many rounds. We had that confidence going on. While we playing the individual, we forgot how to play as a team. So the team unity came back at the very key moment. जो प्रेशर होता है, जैसे आपने सेमीफाइनल्स जब खेले थे तो वो ऑफलाइन थे, ये एक लैंड टूर्नामेंट है, यहाँ पे सब आपको देख रहे हैं, तो डू यू फील दैट प्रेशर सॉर्ट ऑफ बिकेम लाइक अ लिटिल बर्डन, और डू यू थ्राइव अंडर दिस प्रेशर बिकॉज ऑल ऑफ दीज गाइज आर हियर टू चीयर यू? Pressure nahi tha. We were little confused and we didn't know what was going on until the last few rounds. मैं बोला टीम को, guys, we won the 11 rounds already. Why can't we win just 2 more rounds? इतना ही बोला, and play your game, be on guard, just play your game. That's all I said. Don't think about what enemy will do, what we will do. I'll take care of the calling. You just shoot the enemy. That's all we did. So the message is clear. Play your natural game. एक राउंड की बात नहीं थी, यहाँ 13 राउंड जीते, तब जाके पहला मैच इन्होंने अपने नाम किया। अभी भी 2 और मैच हैं क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 3 है, तो एक्शन जारी रहेगा। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वी किक स्टार्ट मैप नंबर 2 बिटवीन टीम ब्लेजिंग एंड टीम फायर्ड अप। Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.
Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.
overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Ladies and gentlemen, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है to Reliance Digital Level Up City Championship for Counter Strike 2. मेरा नाम है क्रिप्स, मेरे साथ है विवेक और हमने इस ग्रैंड फाइनल का पहला मैप ऑलरेडी देख लिया है. सेकेंड मैप एंशिएंट अभी शुरू होने वाला है बिटवीन FiredUP गेमिंग एंड ब्लेजिंग. FiredUP गेमिंग ऑलरेडी ये फर्स्ट मैप जीत चुकी है बट काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उन्हें. ऑफ कोर्स स्पेशली सेकंड हाफ में उनका सीटी साइड काफी सिंपल स्वीट और स्ट्रेट फॉरवर्ड था. 10 to half 10 to yeah, you couldn't ask for more. But जैसे ही साइड स्विच हो चुके थे, they won one round and then after that they really struggled to close out the map. Exactly. उसके बाद राउंड्स जाते गए and at one point तो ऐसा लग रहा था कि फारस्काई अकेला ही शायद उसकी टीम को कैरी करके आगे पहुंच जाएगा. इनफैक्ट हम फारस्काई की बात कर रहे हैं, एक बार हम स्कोर की तरफ भी नजर डाल लेते हैं. इनके इंडिविजुअल फ्रैग्स देखिए. शीश, फारस्काई और फ्लिकर ने टीम ब्लेजिंग को बहुत ज़्यादा कैरी किया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया. उसके बाद ज़ोडियाक एंड येलो फ्लैश ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. डेफिनेटली अगर आप किल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा गौर से देखें ब्लेजिंग की तरफ तो फास्टकाई वाज डूइंग ऑल द हेवी लिफ्टिंग. असिस्ट में भी अगर आप देखा जाए तो फ्लिकर और फास्टकाई ही ज़्यादा असिस्ट सेटअप कर रहे थे. फायर्डअप की टीम पे दोनों घोस्ट ने काफ़ी सही तरीके से प्रदर्शन किया था इस गेम पे. बट चैम्प ऑल्सो क्वाइटली कंट्रीब्यूटिंग और ये मैंने ज़्यादा नोटिस किया था उनके सीटी साइड पे. ए होल्ड काफ़ी स्ट्रांग था. चैम्प का ए होल्ड बहुत स्ट्रांग है. गोस्ट यार ये क्या स्कोर है विवेक? 30 किल्स
but only 4 deaths. ऐसा स्कोर मेरा सिर्फ डेथ मैच में होता, कभी कंपैरेटिव में नहीं. Absolutely, ये बहुत ही वन साइडेड स्कोर लग रहा है मुझे. 30 kills, 4 Exactly. deaths. और ये तो गेस करने की बात है ही नहीं. Obviously the MVP is Ghost. 34 and 14. हाँ, but even though he died 4 times ना, उसमें से एक डेथ उनके नाइफ होने के बाद था. He got knifed once and I think उसके कारण ही घोस्ट इतना भड़क गए तो he was like यार अब तो मैं सबको तोड़ूंगा. And that's why he has like 30 kills and 30 bomb in CS is huge. Considering that this is MR12. Yes. पहले जब CS Go में जब 15 राउंड का एक हाफ होता था वहाँ पे 30 bombs actually काफी common थे, लेकिन ever since the MR12 system has come in, this new system has come in, उसके बाद से 30 bomb actually काफी rare होते हैं. So for him to do such a monstrous performance, it is indeed worth praising. Yeah, it's quite impressive, and I think our second map, Crips, is a map where you can see a lot of individual plays. It's going to be Ancient, it's going to be FiredUP versus Blazing, and it's going to be Blazing fighting for that tournament lives. If they do not manage to win Ancient, pack up, go home, tata, bye-bye. Exactly. I mean, they almost mounted a comeback over here, right? 10-2 half के बाद second half में जब Blazing ने खेलना शुरू किया, उनके जो play styles थे वो इतने ज़्यादा बदले नहीं. काफ़ी similar pattern से शुरू करते थे, default hold करेंगे, बस उनके attack का timing बदल रहा था और वो timing actually बहुत ज़्यादा off guard पकड़ रहा था team FiredUP को. तो I hope इस बार भी वो लोग ऐसा ही कुछ कर पाए उनके attack side पे especially, क्योंकि Blazing will be starting on the attacking side of Ancient. Okay. Yeah. The attacking side can become very frustrating if you're not finding an easy way to break open the A side. If you're losing mid control very early, अगर आप A side पे जाके मतलब बार-बार एक ही ऑपर या एक ही प्लेयर से मर रहे हो तो बहुत ही frustrating हो सकता है. Ancient पे T side खेलना. You also have got to have somebody who's looking for flanks. You can get flanked easily, और of course जो मतलब I think CS:GO में वो call out का नाम था Donut Room. Taking control of Donut is somewhat important. Exactly. And I think because of the existence of Donut, it can be such a wild card map, क्योंकि usually mid control के लिए आपको एक जगह एक जोक पे smoke करना पड़ता है and दूसरे तरफ आप पूरा attention fire करके करते हो. But because the mid over here has so many layers, right? You can play from all the way back Top towards mid, the spin, mid. then top, bottom, exactly. There's even a middle red portion with the doors and everything. So वहाँ पे there's a lot of places. Of course, एक standard smoke bottom की तरफ आ गया तो पूरा cover हो जाता है. But donut को clear करने के लिए भी कितना ज़्यादा time लगता है. Especially when you're trying not to make noise, it can be a bit difficult. I mean, it's so easy to dodge flashes in Ancient as compared to something like a nuke. Yes. Yes. But it's also the kind of map where, sure, CDs can get to sites quickly, but holding on to them can be not that easy. So, बहुत सारे teams ऐसे retake के लिए खेलते हैं, depending on how much mid control they get. Exactly. I mean, yes, retake के लिए कभी-कभी खेलना पड़ता है, and also for the CTs, it is quite difficult to continue flanking in this map. Yeah. Usually जब CTs यहाँ पे aggro खेलते हैं, it is to go ahead, get a single pick on mid or maybe one kill in alley, and then वो वापस fall back करते हैं. Yes. Because पूरा आप flank करने जाओगे, it's actually a very long way around. Yes. और आप इतना ज़्यादा walk करते जाओगे तो भाई पूरा साल कट जाएगा. Yes. I mean, you can't flank too heavily without getting traded very quickly. You will get caught, you will die. So I'm really excited for Ancient and to see what it brings. Most importantly for all of you in the audience, after this best of 3, we're going to be jumping into BGMI Team Deathmatch games. It's going to be some really good fun with some of your favorite influencers. So I'm hyped for that as well. We'll be there for that. And yeah, Blazing, they look good. I don't think they look too troubled after their loss on Nuke, because they know that individually in terms of aim, it's not that they lost because of aim. They know that they just have to apply themselves correctly and they can win. But problem ये है Crips कि Nuke उनका map pick था. Ancient उनका map pick नहीं है. Exactly. एक और problem यहाँ पे आती है कि जिस तरह से टीम FiredUP खेल रही थी न्यूक में एटलीस्ट, वो कोई भी रोटेशंस में देरी नहीं कर रहे थे. लेकिन एट द सेम टाइम ओवर रोटेट भी नहीं कर रहे थे. यू नो, यू कांट call early rotations, nor can you be late. To get that middle ground, it's extremely difficult, and FiredUP almost always did that.
मीनवाइल ऑन द अदर साइड आप ब्लेजिंग के रोटेट्स देख लीजिए, काफी बार अर्ली कमिट कर देंगे, फार्स्काई या फिर फ्लिकर को नीचे भेज देंगे वो लोग। यूजुअली फार्स्काई सीक्रेट की तरफ ऑलरेडी खेलते थे, फ्लिकर रैम्प की तरफ ऑलरेडी रहते थे। तो यहाँ पे जिस तरह से टीम ब्लेजिंग खेल रही थी, दे आर लीनिंग अ लिटिल मोर टुवर्ड्स द ओवर रोटेट साइड रादर देन लेट रोटेट साइड। तो कभी कभी उनको भी बैम्बूजल करना आसान हो जाता था। आई थिंक एक तो डेफिनेटली सिटी साइड पे आप बोल सकते हो कि कभी कभी ओवर रोटेट करने की टेंडेंसीज थे ब्लेजिंग में, बट टी साइड में भी उनका जो बेसिकली लर्क या फ्लैंक करने की जो कोशिश था, especially towards ladder, it was very ineffective. They came, they got stuck, they died. On the other hand, Ghost did the same play. He managed to sneak into ladder and he did it much more effectively. So I think this is a factor of how comfortable you are on the map, how much you played. Because of the change in sound, everybody in CS2 is actually hearing a lot more. So people unconsciously are just shift walking a lot more. In a way, it does hit you like you don't know, अरे यार कितना सुनाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा shift walking हो रही है इस games में, and obviously the tendency to rotate on the CD side. I mean, I think Valve ने ये एक बहुत अच्छी चीज़ की है quality of life improve करने के लिए। अभी आप CS में जब भी दौड़ते हो ना, आपके आजू बाजू मिनी मैप पे एक छोटा सा सर्कल आ जाता है जो आपको बताता है एग्जैक्टली कितना दूर आपका फुटस्टेप जा सकता है। अब न्यूक में उसको जज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे है। सेम विद वर्टिगो। बाय द वे, अगर ये पूरा सीरीज थर्ड मैप तक गया तो वर्टिगो रहेगा हमारा थर्ड मैप, बट एंशिएंट सिंस इट्स वन लेयर वन फ्लोर मैप, वहां पे यू कैन इजीली फिगर आउट कहां तक आपका साउंड एक्चुअली जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। वेल, हमारे पीछे हम देख तो सकते हैं प्लेयर्स सारे रेडी तो है। आई थिंक वी शुड बी स्टार्टिंग आल्सो विद द गेम प्रीटी सून इनफ। ऑडियंस भी उतावली हो रही है, ready to jump into the action. First map already fired up gaming के खाते में। Team Blazing almost come back कर चुकी थी, 10-2 से हार रहे थे वो लोग गाइस, लेकिन फिर भी 13-10 तक ले आए। और ये ऐसा नहीं किया कि उनने जो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्ट्रैट यूज की, उनने नहीं, उनने बस अपने सिंपल एग्जीक्यूट्स को अच्छे टाइम पे दौड़ाया। That's all they did was improve their timing. If they improve the utility usage, it will be even better. क्योंकि इस बार हमने कोई layering नहीं देखी utility की। वो जहाँ पे smoke डालते हैं वहीं पे execute आएगा। Fakes इतने ज़्यादा हमने देखे नहीं, mid round adjustments इतने ज़्यादा हमने देखे नहीं, लेकिन उन सब के बिना अगर Blazing इतना अच्छा खेल पा रही है तो सोचो तब क्या होएगा जब वो लोग ये सब करने लगेंगे। Actually, न्यूक पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया क्रिप्स की, दोनों जो टीम्स थे, they got the majority of the rounds on the CD side. या वो भी है एक्चुअली दोनों टीम्स एग्जैक्टली स्ट्रगल कर रही थी। एग्जैक्टली राइट। आई मीन ऐसा लग रहा था कि मैं 2015 में पहुंच गया हूं जब CS:GO का न्यूक एक्चुअली सिटी साइडेड था। ऑब्वियसली 2018 के बाद थोड़ा बैलेंस्ड हो गया था बिकॉज़ टीम्स फिगर्ड आउट हाउ टू प्ले ऑन द टी साइड, लेकिन या दिस इज अ रियल हिट ऑफ नॉस्टैल्जिया। या आई थिंक both teams were just struggling on the T side. We heard Rossi in the post-game interview. He said we had become a little bit too individualistic. We started playing for ourselves. They got that together as they realized that they didn't have much of a lead. And then one loss scripts. I mean, if you look at Blazing, I think उन्होंने 6-8 राउंड बैक टू बैक जीते सिटी साइड पे, लेकिन वो एक लॉस की वजह से उनका पूरा इकोनॉमी रीसेट हो गया था क्योंकि हर राउंड उन लोग री इन्वेस्ट कर रहे थे नीड्स पे या किसी का गन इधर उधर खो गया था। सो जस्ट दैट वन लॉस वाज सो कॉस्टली फॉर देम एंड या सिटी इकोनॉमी no matter how many rounds you win, you lose one, $1,400 isn't going to cut it. You know, starting of the match में मैंने जो prediction किया था कि we don't see a lot of that new mechanic being exploited, नेट डाल के smoke dissipate करना, मैं complain कर रहा था starting में कि यार लोग ये कर नहीं रहे हैं ज़्यादा, but we actually got to see quite a lot of it. Like especially जब भी कोई भी टीम, चाहे वो Blazing हो या चाहे वो FiredUP Gaming हो, जब भी वो outer side पे smoke वाला wall बना के execute करने की कोशिश कर रहे थे secret जाने के लिए, वहाँ पे हमने काफ़ी बार देखा नेट से smoke dissipate होने की कोशिश की जा रही थी। I think एक चीज़ मैंने नोटिस किया उसी मैकेनिक से रिलेटेड, जो एक चीज़ है कि अगर एक स्मोक है, अगर एनिमी का स्मोक है और ये चांस है कि एनिमी उसी स्मोक पे नेड फेंक के उस स्मोक को डिसिपेट कर सकता है, lot of teams re-smoke their side as well. Like at ramp, I saw both the CTs and the Ts smoke off ramp.
So even if there's a grenade, you don't get spotted at lobby by any chance. Anyways, we're ready to go. It's our second map of the day. It's Fired Up Gaming versus Blazing. You're watching the Reliance Digital Level Up, powered by Omen and co-powered by Intel and HyperX. My name is Vivek. With me is Crips. Nexus Seaward Mall. Are you ready? I love the energy of the crowd over here. Maza aa raha hai. And Blazing also with a blazing start are heading right towards B. बहुत ज़्यादा fast scaffolding के through push. And this crossfire has been instantly broken by Flicker. लेकिन Champ re-aggress करेंगे from the other side. Within a matter of seconds, Blazing is dead. 10 सेकंड का राउंड था ये विवेक. अभी तो शुरू हुआ था, खत्म भी हो गया. It just felt like I just finished saying, "Are you ready?" And yeah, we're done. Okay. Well, it looks as if Crips is having his battery change, but till then, Fired Up versus Blazing. Fired Up have won the pistol. They've got a healthy buy. There's no way that they'll lose the second round. And Blazing, well, they're just moving as a unit. They're going to be running into a bunch of MP9s. This is going to be a very tricky fight for the Glocks to take. Aggression towards the B side coming out from Champ. He's got to be careful. There is a boost coming out. YF and Champ both jiggle picking each other. No one committing. This time around, Blazing will be patient. But YF gets spotted, gets dealt with, and Fired Up get their first kill of the second round, their first buy round. Eventually, the presence towards the B side from Blazing is going to be squashed. It's not going to accomplish too much, and the flank is there. It's Ghost with the FAMAS. Ghost getting 2 crucial kills. The MVP of the first map really setting up for Fired Up in this very simple, straightforward second round. They clean up all of Blazing and do not lose a single member, a single weapon. Blazing this time around, though, they're going to have a buy. They're going to have everything that they could ask for. It remains to be seen what they do with this, whether they go towards the B side Crips or whether they actually try and take mid control. Well, इस बार mid control लेने की कोशिश तो नहीं है, लेकिन रैंप की तरफ जो उनके टीम प्लेयर्स कमिट कर रहे हैं ऑलरेडी, ये शायद एक अच्छा पिक बन सकता है. लेकिन Fired Up Gaming with their mid extraction of their own, येलो फ्लैश के द्वारा मारे जाएंगे. That is a little too much, but Rossi continues to hold his ground. That nade is amazing. If he comes up a little bit, he should be able to kill Yellow Flash, and he does. It's a triple for Fired Up Gaming. All the men they lost starting में सारे मारे जाएंगे, लेकिन नहीं, timing हो गया यहाँ पे Rossi के साथ. Fars guy caught him off guard, caught him changing weapons. लेकिन अब बॉम्ब रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. उन्हें मालूम नहीं कि मिड पे और कौन आएगा, और वो तो सिर्फ मिड का ट्रबल है. चैंप ऑलरेडी रैंप के नीचे पुश करके कैटवॉक पहुंच चुके हैं. Yeah, he's definitely pushed out Catwalk, but I don't think Fired Up Gaming know exactly where the bomb is. They do know where Faskai was, but Faskai is being extremely patient. 51 seconds on the clock. What does Faskai decide to do? I think this is the end of the round for Blazing. Yep, Champ, very patient and poised, will clean up on Faskai. The danger man for Blazing taken out of the equation. Fired Up put their third round on the board. They put their third round on the board, and with this, they have actually denied Blaze King all the advantage they could have acquired in the early halves. अब उनके पास max loss bonus activate होने वाला है, और वो eco भी कर रहे हैं. Tech 9s and Deagles उठा चुके हैं. सिर्फ Yellow Flash के पास गिलिल है. देखते हैं वो ये force rush करके कहाँ जाएंगे. Oops, एक दो Molotovs miss हो रहे हैं, लेकिन at least इससे Blazing उनके रास्ते में रुक जाएंगे. They won't be able to put that fast rush onto B just yet. I mean, sure, the Molotovs missed, but it's really hard for Blazing to find any access into the B side. There's one man that they need to get past, and that's Champ. Champ delivered a nuke, and he'll deliver it again on Ancient. Eventually, somehow though, Blazing get the bomb planted, or they're about to get the bomb planted. Yellow Flash is planting it. It's a 2-3. Blazing in the afterplant, and it's now just Yellow Flash all by himself. Not much space to walk with. Gets one kill, but that's about it. Nox will shut him down. Blazing do at least manage to plant the C4. ये smokes जो उन्होंने डाले थे वो actually थोड़े ज़्यादा shallow हो गए, और थोड़े deep जा सकते थे to cover long and short.
लेकिन उनने कहा कि यार अगर हम ये दोनों स्मोक डाल देंगे तो शायद फायरअप गेमिंग फ्लैश करके आगे पुश कर सकते हैं. दैट्स व्हाई उनने बस प्लांटिंग एरिया पे स्मोक डाला टू कीप देमसेल्व्स अ लिटिल मोर सेफ. एंड आई थिंक दैट वाज द राइट कॉल फ्रॉम ब्लेजिंग एज वेल. जिस तरह से फायरअप गेमिंग एग्रो खेल रही थी, दे डोंट नो कि अगर केव में कोई प्लेयर है कि नहीं. दे डोंट नो कि अगर जो वॉल बैंग एरिया है वहां पे कोई छुपा है कि नहीं, निंजा में कोई छुपा है कि नहीं. तो जस्ट टू मेक श्योर कि कोई उन्हें बैकस्टैब ना करे या फिर कोई उन्हें सरप्राइज ना करे, उनने ये शैलो स्मोक डाला रादर देन डीप स्मोक डालने के बदले. And it got them the plant, but exactly. Then we know what happened. Exactly. I feel like he didn't have too many options and too much time to really commit to a deep smoke. The real question is, will Blazing get control of anything towards mid? They're really being pushed back towards the spawn, it almost feels like. Oh, hold on though. ये देख लीजिए A side पे उनका कितना ज़्यादा बड़ा दबदबा है. We have Zodiac over there positioned already. And while he does that, the rest of his team is still chilling on catwalk. They're waiting for the smokes to fade. Slow खेल रहे हैं Blazing ये राउंड में. उन्हें मालूम है कि फायरअप गेमिंग मिड कंट्रोल लेके कैट की तरफ आ चुके रहेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ वो लास्ट के 2 राउंड्स में कर रहे थे. इस बार फायरअप गेमिंग ने भी अपनी अप्रोच बदली है. उनने केव में एग्रेशन दिखाया है. Something that they haven't done in these 4 rounds, and I don't think Blazing will expect this. Rossi का timing mid से आया, and with this, Yellow Flash looks back. वही time पे champ strike करेंगे. Bait and switch to its perfection. Really good stuff coming up from FiredUP Gaming. Blazing, I mean, they're just leaking through their default. There are too many holes, and I don't know if they have enough time to fix this. Zodiac, he's going to try and force himself onto the side, but he's going to be flash blinded and shot down. It's Rossi Bob being set up by Nox, being enabled by his team, and Blaze with a nade in his hand and a bullet in his head will watch from the sidelines as 5-0 FiredUP take a huge lead, Crips. ब्लेजिंग के जो प्लेयर्स ए पे क्रीप अप कर रहे थे, उनने बहुत टाइम तक अपनी पोजीशन को छुपा के रखा, लेकिन जैसे ही उनके 2 प्लेयर्स कैट पे मारे गए, उनने बोला कि यार अगर फायरअप का एग्रेशन इधर आ रहा है शायद ए क्लियर रहेगा. तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लेजिंग ने जो ए पे असॉल्ट बोला, जो धावा बोला, वो एक्चुअली देखे तो गलत नहीं था. विद द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे हैव, बट उनका C4 इतना पीछे था. जब तक वो जो स्टार्टिंग के अटैकर्स कंट्रोल लेते, थोड़े बहुत किल्स लेते, तब तक बॉम्ब आता ही नहीं. I think I 100% agree with that, but वो mid पे जो basically control की कमी है Blazing की तरफ से, that's starting to hurt them. They really have no information towards mid, and they're trying to take mid round or late round control, and it's not really working for them. And you can now tell why the flaw in their executes exists, right? Yep. Blazing ने already team flash commit कर दिया mid control लेने के लिए, जबकि FiredUP Gaming का कोई play उधर था भी नहीं. Which is fine enough. FiredUP Gaming can give up control of mid this round. They let Blazing get all the way up to red. लेकिन उसके बाद क्या? सिर्फ mid control रहने से तो फायदा है नहीं. आपको कहीं से तो split push करना पड़ेगा. Split का तो अंदाजा है ही नहीं Blazing के पास इस तरफ. Even if they manage to get picks on mid, where will they go from there? This kill is crucial. I mean, Rossi Bob, if he died without getting a kill, that control towards mid could have really paid dividends. And now it seems as if Blazing, they're going from mid to B. It's one man that's got to hold on, and it's Champ. He's done a lot of new trips. और उन्हें मालूम नहीं है कि केव में एक और है. चैम्प का बैकस्टैब आ गया. एटलीस्ट बॉम्ब प्लांट हो चुका है, लेकिन इस नेट से थोड़ा और डैमेज हो सकता है. लेकिन यहाँ पे बादशाह अकेले है और यहाँ पे डिफ्यूज ऑलरेडी हो जाएगा. Zodiac, he isn't in a position to continue diffusing anymore, to continue supporting the bomb anymore. Champ making progress, gets the last kill of the round, secures the round for FiredUP Gaming. As well, the legend is here. All of a sudden, the crowd goes wild. The match itself is insane, but they're going insane for some completely other reason. And even though I myself can't see him yet, given the noise, given the hype, it would seem that the legend himself is in the house. FiredUP Gaming off to a great start as usual. How many rounds can they get away with on their CD side? When does Blazing find some sort of an opening? Last time they took control towards mid work, but this time Rossi dinks Blaze. The IGL of Blazing limping back, but it's Yellow Flash who opens up.
Yellow Flash does open up, लेकिन re-aggression नहीं आया FiredUP टीम की तरफ से. And they don't need to either. Donut control A plant पे एक और player है. Open ने यहाँ पे सिर्फ एक को spot किया है, लेकिन it's not the bomb carrier. तो इसीलिए FiredUP Gaming के rotations already आ चुके हैं, लेकिन I would be really surprised अगर B पे blazing का execute जाता है तो. फिलहाल के लिए तो वो भी mid की तरफ जा रहे हैं. And the mid smoke has just faded. वो करने available है नहीं और Nox ने इसी का फायदा उठाया. Line of sight available. Player down. He re-peeks once more. Will he be able to get anyone else? Oh, he peeks again. That peek should have been punished. I feel like Blazing were caught snoozing. Nox getting away with a bit too much and Ghost pinstring them. Spots Yellow Flash moving through the B side. Turns towards Flicker, takes care of him. And now YF, Yellow Flash, not sure where he is, who's around him, what's going on. The B side is in shambles. Ghost will peek with the AWP. Yellow Flash caught looking. Two ways at once, gets shut down, and Rossi Bob with the last kill brings down Blaze. The IGL of Blazing dead and FiredUP put their 7th consecutive round on their CT side on their map pick. This is a little too much for me to handle. 7-0. It's almost as if they know that Shriman is coming and hey guys, we can just get done with this really quickly and move on. That could be the case. That could very well be the strat here. Feel the energy, feel the madness. Speaking of energy, Blaze King are putting all of their energy into this execute towards the A site. All eggs stacked in one basket, Tech 9s in their arms, flashes at the ready. They're ready to burst out. Donut and mid, दोनों control ले लिया है FiredUP Gaming ने, लेकिन there's one person who can stop this and he's towards Plat. It's gonna be up to Nox to somehow survive this barrage of flashes और एक भी flash उन्हें hit नहीं करता है, उन्हें check भी नहीं किया जाएगा. A nice kill from him, लेकिन Tech 9s actually काम कर रहे हैं यहाँ पे. Blazing को opening picks मिल चुके हैं. With the re-entries from Quad, एक और frag FiredUP Gaming की तरफ से and it's back to a 2v2. Finally शायद Blazing यहाँ पे एक round निकाले. Well, I mean, it's almost as if Ghost heard you, Crips. Very quickly, Fast Sky was taken out of the equation. The top factor for Blazing not there. It's just now Blaze, the IGL, all by himself. The weight of this round on his shoulders. He's got himself the C4 to work with. There's an op that he has to consider. Options also that he can consider, knowing fully well that he's got 40 seconds to work with. और FiredUP Gaming में इन्हें hunt करने नहीं जा रहे. उन्हें मालूम है काफी टाइम है. Blazing आराम से reposition में कहीं पे भी जा सकते हैं. बॉम्ब भी उनके पास है. Ghost spots him, takes down the IGL. टाइम बिल्कुल नहीं दिया इन्हें. Blazing के पास मैप कंट्रोल तो शायद नहीं था, लेकिन उनके पास स्पेस बहुत अवेलेबल थी. उनके पास लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही सीटी की इंफॉर्मेशन थी. अगर उन्हें पता पड़ता कि दूसरा सीटी भी वही बाजू में है, टेंपल की तरफ से खेल रहे थे, तो शायद वो बी पे बहुत जल्दी पहुंच चुके होते. But he took his sweet time. वो मिड पे और भी रुके रहे, hoping that he will be able to get a pick, hoping to catch someone off guard. वो तो नहीं हो पाया. FiredUP Gaming, they're just going to YOLO out of mid. Feels like the B side on Dust 2 with the amount of utility being exchanged here. Blaze, he wants to deal with this push. He gets jabbed, the spray transfer doesn't work. Nox will bring him down, and Fast Guy, the key frag up on the side of Blazing, dead. It's all falling apart for Blazing as it's just Zodiac and Flicker. Still a 2v3 and still winnable, Crips. This is still winnable, लेकिन उन्हें प्लांट करने के लिए अंदर आना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत डेडली क्रॉसफायर रखी हुई है. सिर्फ Zodiac इस क्रॉसफायर को तोड़ सकते हैं. उन्होंने टाइमिंग अच्छा पकड़ा है. दोस्त को मार गिराया. Nox comes out to the plate and Rossi comes swinging wide. FiredUP Gaming with 9 rounds in a row. Can't be a 13-0 Gavin, Crips. हो सकता है शायद. I mean, it's not impossible. FiredUP Gaming. The roster was made, paid dividends for them. This time around though, it's heavy presence towards Donut with 2 players posted towards the B side. They have managed to get Ghost back his big green gun, the op. Flashes being tossed out and Blazing just being slower, being patient, waiting for FiredUP to over-aggress. But over-aggress they will, and Zodiac not ready to punish them. Blazing in a 4v5.
I think this might just be the best 4v4 that they have a chance of converting so far. Oh, nice. Rossi tanks the Molly and he actually kills one with it as well. And he's still holding strong. Blazing के जो प्री प्लेयर्स A main से आ रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए रहेगी और येलो फ्लैश के कारण ब्लेज को एक और किल मिल गया है. That's actually nice. और उन्हें चैंप की पोजीशन पता है लेकिन चैंप नहीं, उन्हें बॉम्ब कैरियर गिरा दिया. अब येलो फ्लैश को उन्हें चेस करना पड़ेगा और चैंपियन के लिए तैयार. The IGL stepping up for FiredUP Gaming once again. 10-0 domination. This has been a very one-sided affair so far, but folks, I want to remind you that Blazing came back from a 10-2 half to make a very respectable comeback on Nuke. They've done it in the online phase. I think the more difficult and the more unnerving the scoreboard, the higher the chances of Blazing mounting a comeback are. It remains to be seen what FiredUp's T side looks like as well. So I think we can't just discount any of these teams just yet. I like that Blazing, they've called a tactical timeout. They're taking their time. A lot of parents in the audience confused as to what is going on. This cannot be explained shortly. Check your child's social media. I think some of the people in the crowd believe that Shriman Legends might be here already, even though he said that he's going to be here after an hour or something. Well, can't blame them for being excited. Oh my lord! Through the smoke? Was that a collateral from Ghost? I think it was. It was. Sheesh! I wish I saw that on camera. Quad control ले लिया है Blazing ने. उनको A पे entry मिल सकती है. यहाँ पे जो भी players है FiredUp Gaming के सिर्फ CD side and A main से खेल रहे हैं और दोनों check करने के चक्कर में Ghost को एक और option kill मिल जाएगा. Finally, Yellow Flash is able to shut him down. लेकिन क्या फायदा इसका? He's already so low on health. Bomb गिरा चुके हैं side के बीचों बीच. लेकिन with that headshot, he might just have a chance. A 1v1 to give Blazing their first round of this map. It's Ghost versus Yellow Flash. The Haunting versus the Lightning. Who's gonna come out on top? They just passed by each other. Bomb recovered. Blazing के पास पांट करने का opportunity है. Time भी काफी सारा है. लेकिन Ghost को अभी भी लग रहा है कि उनके opponent शायद mid पे है. I mean, he'll hear the sound of the C4 and then eventually understand that he has to move over to the side. But look at this Yellow Flash. Is actually swinging over to B. Still a 1v1, still very winnable for Ghost, and I think he's got a whiff of what is going on. Yellow Flash doesn't have too much health to work with, and Ghost has himself a smoke and a flash cruise. Oh, this has to be the longest 1v1 we've seen in the tournament so far. Nerves racking. अब Ghost को हर एक angle, हर एक जगह अच्छे से check करके उसे बेट आउट करना पड़ेगा. स्पाइक पे एक टैप मार के भी वो शायद ही येलो फ्लैश को पूरी तरह से लर आउट कर पाएंगे. एंड ही स्टिक्स इट. आर यू सीरियस? ही एक्चुअली जस्ट स्टिक्स द होल डिफ्यूज. येलो फ्लैश उनने पीक भी नहीं कर पाए. इतना लंबा 1v1, इतना लंबा वेटिंग गेम और उसके बाद एक स्मोक डाल के पूरा डिफ्यूज कमिटमेंट. This has to be the funniest loss for Blazing. Absolutely. Sometimes wars can be won without even firing a single bullet. Just sheer diplomacy and diffuse kits is what the world needs. As wish the world actually listened to you at this point. I mean, that has to be the strangest 1v1. I believe Yellow Flash heard it, right, Trips? He would have heard the smoke, he would have heard the kit. But maybe the chance of Shriman Legends are a bit too loud, and I don't blame him. Ghost and Rossi Bob though will push and they'll be rewarded, but only until a limit, as Flicker and Fast Guy do chime in with a couple of quick kills. As Fast Guy and his fellow IGL Blaze in a 2v3. FiredUp Gaming want to make a quick one out of this one. They push down Cat, get all the possible kills necessary, and yet another one as Fast Guy tries to peer out of that smoke. It's just down to Blaze, the captain himself, hoping to give his team one single round. Will he be allowed even one? Or will this be a completely one-sided domination? The good news is he has a bomb. He has the C4 rather to work with. And he has the time.
He's got 48 seconds. It is good enough time. The thing is, he's currently in the middle of nowhere. It looks like he'll commit towards the B side. To clear the B side with 2 people on it can be difficult in 37 seconds. But timing. he's got to try. Ghost unfortunately repositions himself. This might just be exactly what Blaze needs. Exactly. उन्हें थोड़ी देर के लिए मिड खुला छोड़ दिया था, तो इसलिए चैंप को लग रहा है, सॉरी चैंप को नहीं, यहाँ पे नॉक्स को लग रहा था कि शायद वो मिड से स्नीक इन करके टेंपल के साइड से ना आ जाए, लेकिन फाइनली उन्हें स्पॉट कर दिया गया है एंड ही इज बीन टेकन डाउन एज वेल. विवेक, दिस फील्स अनरियल. 12-0. फायर्ड अप गेमिंग ये यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक नहीं, यहाँ पे स्पीड रन कर रहे हैं. It is being a very quick first half coming out from Blaze. I think from FiredUP actually. Blazing really caught unaware as to what is going on, and well, to begin with, they need to win their pistol. Let's see if they can put together that at the very least. And the very least. Yeah. In the second half, all they need is a 100% win record, and then after that they need to win OT, and then after that they need to go on to Vertigo. So it's a very long and uphill journey. Have you ever made a comeback from a 15-0 or a 12-0 equivalent? The best I've done is a 13-2. It's not the same. I mean, 12-0 is a little too much. Yeah. Feels a little brutal. Yep, it is. It's rough. And unfortunately, Blazing are not off to a good start. Fast Sky Absolutely and Flicker not. die. Nox is planting the C4. YF Whoa, and whoa. Zodiac will get a couple of juicy one taps with the USP, but that's about it. It's a 2v3 and Blazing their tournament lives on the line grips. 2 versus 3. This retake has to be successful. Crossfire clear नहीं किए हैं. Nox ने final blow almost deliver कर दिया है, and Champ deals the death blow. Ladies and gentlemen, put your hands together for the champions of Reliance Digital Level Up City Championship. It's FiredUP Gaming. A devastating 13-0 defeat dished out to the vanquished. Not much to really talk about. I feel like Blazing didn't even get to play the game. Yeah, it's like they just never hit the ground running. But kudos to Blazing. They fought really well on point, and a well played series from both teams. Blazing, deservedly so, are the champions, the winners of the Digital Level Up Citywide Championship for CS2. You know, मैच शुरू होने से पहले FiredUP के साथ जब हम बात कर रहे थे, उनने कहा था हमें कि उनने अपने सारे टफ अपोनेंट्स को ऑलरेडी हरा दिया है. उन्हें बहुत सारे टीम्स को क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स में हराया, एंड द टीम दैट दे वर मोस्ट अफ्रेड ऑफ, गॉड्स रेन, उनको ऑलरेडी क्वालिफायर स्टेज में बाहर एलिमिनेट कर दिया था. कमिंग इनटू दिस गेम, उनने सुबह को ही ठान लिया था कि ये टूर्नामेंट तो वो ही जीतेंगे, और उनको ये पूरा यकीन था, खुद पे इतना भरोसा था कि वो जीतेंगे, लेकिन 13-0 विक्ट्री शायद उनने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं की हो. Yeah, I mean, we were talking about this during the veto grips. If your map pick, which is Nuke, is not the map you're winning in what seems to be a very tricky veto, I don't know if it gets easier, and Ancient definitely wasn't easy. But you know what? This is just the beginning of the history books of CS2. And there's a lot to be written. And Blazing today might have not been their day, but there's a long road ahead of them. And I'm really hoping to see more from this team, more from Fast Sky, more from Flicker, more from all these players on the side of Blazing. But today it is FiredUP who are Omen. Well, I think we've got Sarthak around, and we should be able to have a quick interview or a quick moment on the stage whenever he's ready. I don't think he was ready for such a quick game. So
I can understand. We can give him a little bit of time. Should be able to jump into that segment really, really quick. But Crips, was there, I think, the one round where Blazing really seemed to challenge FiredUP was their anti-eco, where they ran Tech-9s and they nearly found themselves into a winning place. That round and the 1v1 where Yellow Flash just didn't hear the diffuse sound or didn't hear the smoke. That was being just dropped. tragic. वो round देख के मेरा खुद का दिल टूटा यहाँ पे. It's weird. I mean, I don't know. Maybe he was trying to rotate and he thought he would be able to rotate and come back, but he had actually planted for his position. So, Yeah, I mean, जहाँ से plant किया था वहाँ पे ऐसे wall bang पड़ सकता है, but again, he's so low कि अगर reverse wall bang आता, शायद वो खुद मारे जाते. Plus, उनने ये एक बहुत famous line है Counter Strike का, जो दिमाग में नहीं रखा, and that line is pros don't fake. उनको लगा था कि काफी टाइम है, बॉम्ब अभी जस्ट प्लांट किया था और उसके 2 सेकंड बाद ही डिफ्यूज शुरू हो गया था, तो ही थॉट शायद फेक होगा, शायद थोड़ा और टाइम करने के लिए वो अपने पोजीशन गिव अवे ना करने के लिए छुपे रहे. बट उन्हें क्या मालूम था कि वो पूरा कमिट हो चुका था. एनीवे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड गेम था. आई एक्चुअली वांट to talk to the players of FiredUP Gaming. I want to see what these guys had going on in their mind, because 13-0, oh, that is just disgusting. That is a little too much. Yeah, I mean, well, ladies and gentlemen, it seems like our host is in place, and soon enough, he will get up on the stage and ask the questions to all the people of FiredUP Gaming. A request to everyone to please keep calm. श्रीमान भाई का मैसेज है, शांति बनाए रखें प्लीज. आप जितना हो सके शांति से माहौल, अगर यहाँ पे ज्यादा आप अग्रेसिव हो जाएंगे तो श्रीमान भाई भी नाराज हो जाएंगे. प्लीज आप शांति का माहौल बना के रखिए. सबको उन्हें देखने का, मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको शांति जितनी हो सके बनाए रखनी है. मुझे एक मैसेज मिला है सीधा श्रीमान दादा से कि वो नहीं आएंगे अगर इस तरह का माहौल जारी रहा. आप लोग जितना हो सके शांति रखिए. ओके, यहाँ पर समय है, यहाँ जो दूसरा मुकाबला हुआ था, जो इस टीम ने 13-0 से जीता है. 13 love. Team Blazing. Okay, I stand corrected. Team FiredUP, you all have done it in style again. I was too much occupied with Shriman's entry, so let me hear what you have to say in regards to this phenomenal win. Nothing. I have run out of my words because the fans are literally waiting for one of the famous person and one of the kindest person. I want fans to stay calm. He's gonna come. He's gonna bless you all. And I'm happy that we won this game so easily. We knew that was the score gonna be in the second map. And what is beautiful is when you come into an event like this, at this level, you obviously won it in the offline event when you all were playing the semi-finals. But to win it in such a grand stage, it takes a lot of guts. The pressure was high, and it's the grand finale, and you have won it in Counter-Strike 2. This is India's first Counter-Strike 2 LAN event. So you'll have created history. I want to hear your thoughts. How happy do you feel? It definitely feels great to be winning the first CS2 LAN in India. We hope to win more in the future. I hope we stay together as a team, but I don't think that's going to happen. But yeah, GG's to Blazing. These guys were amazing. Good sport. But yeah. So let's hear it for Team FiredUp once more.
Okay, so there are two players whose names are ghosts. Okay, the two of you, when all of you had to communicate with them, how difficult or easy was it? It was extremely difficult, but we managed it, and we had like two guys named Ghost, and like one guy Champ, and he had like mic issue, and we were basically playing 4v5, and like no comms from this guy, but he was just focused on his game, and he was just shooting everyone, and their names are the names are same, but like when we say Ghost, the player understand which Ghost we are talking about. So it's like they make us easy for us to play the game. So these are memories that stay with you for life. And as he, you know, I heard from him, he's not sure if they're going to stay together, but I wish the five of you, this is the beginning of many such victories. This is the beginning of many such trophies for you, and may you keep growing. But a huge round of applause for Team Blazing. In the semi-final, they were down and out. They made it to the final from a near escaping defeat in the closest, barest of margins, and you all gave your best. You played your hearts out. You should be proud of yourself. So let's hear it for both these teams. And we're moments away from kickstarting the Streamers Showdown, where we'll have Counter-Strike 1.6. So stay tuned with us. It's time for a short break. On the other side, the action continues.
picks up from here. एग्जैक्टली काउंटर स्ट्राइक 2 ये गेम भले ही 1 या 2 महीना पुराना है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक जो गेम का फ्रेंचाइज है वो मेरे से ज्यादा पुराना है. दिस गेम इज ओल्डर देन आई एम. एंड फायर्ड अप गेमिंग ने आज जो किया है, इतिहास रचा है. 13-0 विक्ट्री आज तक कहीं कहीं किसी ने भी नहीं देखी है, एटलीस्ट लैन पे तो कभी नहीं. ऑनलाइन शायद आपको 1-2 मैचेस में दिख जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसे लैन के मुकाम पे इतने सारे लोगों के सामने ऐसी डोमिनेंट विक्ट्री हासिल करना बहुत मुश्किल. Massive, massive, and वही तो खूबसूरत बात है कि यहाँ से it only gets better for the Indian gaming industry, especially when you saw at the Asian Games what our esports athletes did, the discipline, the dedication, the training that goes into it. It's no less than something you would put in to get onto a cricket field or a football ground. Yeah, मेहनत, डेडिकेशन, ये तो हम सिर्फ बोलते हैं. मैं आपको इसका असली एग्जांपल देता हूँ. आप लोग जिसके लिए इंतजार कर रहे हो ना, वो दिन के कितने घंटे स्ट्रीम करता रहेगा? किसी को मालूम है आंसर? मालूम है किसी को आंसर? और जोर से बताओ यार. एक दिन में कितने घंटे स्ट्रीमिंग करते हैं आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स? आपके हिसाब से कितनी मेहनत जाती है? मुझे यहाँ पे एक जगह 15 सुनाई दे रहा है. 15, 20. भाई 20 ज्यादा नहीं हो गया? ये साइड से रिस्पांस नहीं आ रहा. लगता है वो लोग इंतजार करने में उतावले हैं. एक बात तो पक्की है क्रिप्स, यहाँ पे जितना आपको आसान लगता होगा, ये सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं, इसके पीछे सालों साल की मेहनत, मशक्कत है, संघर्ष है, तब जाके इस मुकाम तक पहुंच पाए. और इट्स जस्ट दीज वर द टू टीम्स. देयर वाज अ मैसिव रन बिहाइंड दिस. इतने महीनों की एक दौड़ के बाद, एक सफर के बाद यहाँ तक पहुंचे. टीम फायरिंग, team blazing, team fired up, and just the best part about it is just look at the turn up. ये माहौल देखिए. I mean, this is massive for the teams around India who are trying to fight it out, make a name for themselves, the individuals who are trying to build this esports community. This just sends out a strong message. And what an initiative by Reliance Digital. You know, they are pioneers, they're revolutionizing Indian gaming. When you just look at it, the kind of effort and the time that has been invested, whether it's the financial aspect of it or the time and energy, it's massive to take this up, and it's certainly elevating the standards for Indian gaming. Definitely. I mean, अगर हमारे फेवरेट स्ट्रीमर्स ही इतना मेहनत करके इतनी ज़्यादा देर हमको एंटरटेन करने में लगाते हैं, तो सोचो हमारे फेवरेट एथलीट्स कितना मेहनत करते रहेंगे. सुबह उठेंगे, स्क्रिम्स करेंगे, फिर वार्म अप, फिर वापस स्क्रिम्स, फिर डेमो रिव्यू. किसी को अपने फेवरेट एथलीट का नाम यहाँ पे बोलने के में इंटरेस्ट है? देखो स्काउट सुनाई दे रहा है. रेगा, okay, that's also a very nice choice. Any other names over here? Let's go to this side. Any of your favorite streamers, any of your favorite gamers, नाम लीजिए. सबके नाम पे लगता है, सबके मुंह पे एक ही नाम है, लेकिन वो तो स्ट्रीमर हो गए. मैंने फेवरेट एथलीट का नाम पूछा है. फेवरेट एथलीट कोई है यहाँ पे और कोई? That's a good one. फेवरेट ई-स्पोर्ट एथलीट का नाम बताइए किसी को. Goblin. Any else? I can hear Jonathan too. I mean, just look at this, no, Crips. I mean, these guys have become legends in their own right. Just by the turnout here, you can understand that हमारे event का नाम है Digital Level Up, and the level has gone through the way roof, beyond. the roof. I mean, just look at the kind of support, and we want to thank our partners, our sponsors, especially when you look at how much support Omen has put in. When you look at how everyone, especially the venue partner, the location partner, Nexus Seawoods, for them to allow all this to manifest and to give an opportunities to so many youngsters to take up esports as a career now. Taking esports as a career, क्या कभी किसी ने सोचा था esports career बनेगा? आपने कभी सोचा था? बनना चाहोगे आप भी? रिस्पॉन्स इतना मिक्स्ड आ रहा है, लोग डिसबिलीफ में हैं, यकीन नहीं हो रहा है. And we're just moments away just to recollect and recap what happened through the day. We had a mega contest where Team Fired Up and Team Blazing locked horns. Team Fired Up ने 2 मुकाबले जीते, 2 मैप्स जीते, और उसके वजह से उन्हें
ये ट्रॉफी मिल गई चमचमाती, और ऐसे कई सारे मुकाबले आपके लिए आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, महीनों में। तो आप आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स को फॉलो करते रहिए, बने रहिए। एंड हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिर से ओमेन का, इंटेल का, हाइपर एक्स का और नेक्सस सीवुड्स का, जो उन्होंने इतना बड़ा मंच सजाया है, एक मौका दिया है इतने सारे यंगस्टर्स को ई स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाने के लिए। और यहाँ पर ये जो भीड़ है, ये एक ऐलान कर रही है, एक संदेशा पहुंचा रही है कि अब आने वाला भविष्य ई स्पोर्ट्स का है। आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की, मुझे मन कर रहा ना माइक इनको देके अपॉर्चुनिटी बोलने की, इनको दे। चले थोड़ा क्राउड में चले, चलो लेट्स गेट इन। सबसे पहले शांति बनाए रखें, जितना हो सके आप आराम आराम से, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब शांति से दीजिएगा। आप बताइए आप कितने बजे आए, कहां से आए हो और आप किसको चीयर करने आए? श्रीमान लेजेंड, भाई यहाँ पे सुबह 11:30 बजे से खड़े, कंटिन्यू दादा को बुलाओ। हम लोग सुबह 11:30 बजे से खड़े, कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, जल्दी दादा को बुलाओ। डिमांड तो बहुत ज्यादा है दादा के लिए, लेकिन ये तो दादा की बात हो गई। आपके सपनों के बारे में क्या, आपने कभी स्पोर्ट्स में ट्राई करने की कोशिश की? बहुत ट्राई किया, हम लोग कस्टम वगैरह खेलते हैं, हमारा भी ग्रुप है, वेरी नाइस, कस्टम खेलते हैं। वेरी नाइस। मेरे फ्रेंड्स पीछे ने तो आपको मिलवाता था, हमारा भी एक ग्रुप है, हम भी काफी कस्टम वगैरह खेलते हैं और अभी तो ट्राई कर रहे हैं। आई होप कि फ्यूचर में हमारा भी कुछ होए। आई ऑल्सो होप दैट। गुड लक ब्रो। और कौन है यहाँ पे जो अपने ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता है, अपने ई स्पोर्ट्स की जर्नी के बारे में बात करना चाहता है? ये बताइए, जो स्ट्रीमर शोडाउन होने वाला है, जहाँ चार स्ट्रीमर्स के सामने हैं, उनमें से आप किस टीम को, किस स्ट्रीमर को सपोर्ट कर रहे हैं? I am infamous mafia, always, forever. और कोई टीम बी में से किसी स्ट्रीमर को सपोर्ट कर रहा है? नोबिता है कोई यहाँ पे जो हमारी फीमेल फैंस आई हैं, उनमें से आप किस फीमेल स्ट्रीमर को सपोर्ट कर? आई एम चार्ली एंड आई एम वाले जो भी है सबके साथ वी आर देयर। Wonderful. It's great to see all age groups across genders coming out in such numbers on a Sunday to back their favorite stars. And इस तरह का फैंडम, ये एक संदेशा है, इशारा है कि भारत और ई स्पोर्ट्स किस दिशा में बढ़ रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है। And it's amazing that we have such kind of die-hard fans for a sport which is picking up by the minute, by the seconds actually. And we are moments away from kick-starting the streamer showdown, so stay tuned for that. हमारे साथ बने रहिए, it's going to be a massive contest. We also have the cosplay, जहाँ पे costumes में आपके favorite characters एक फैंसी ड्रेस की तरह आप समझ लीजिए, यहाँ पर ड्रेसअप होके आएंगे, आपके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स नजर आएंगे, तो उसके लिए भी आप इंतज़ार करिए। गिव अवेज भी होने वाले हैं, काफ़ी सारे तोहफे हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, तो हमारे साथ थोड़ा और सब्र के साथ बने रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।
Let's hear it for our streamers. Digital Level Up, presented to you by Reliance Digital. The stage cannot get any bigger than this. This is what you all waited for. इसी का इंतजार कर रहे थे आप. और अब शोर से इनका स्वागत करिए क्योंकि यहाँ एक बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है. स्ट्रीमर शोडाउन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ये मुकाबला बेस्ट ऑफ 5 का. टीम ए में 4 पसंदीदा स्ट्रीमर्स आपके और टीम बी में आपके फेवरेट 4 स्ट्रीमर्स. जल्द यहां ये कॉम्पीट करेंगे एक बेस्ट ऑफ 5 मुकाबले में. Here are your 8 streamers on the screen. Can we hear it for each of them? Digital Level Up. And here things go to the very next level. The competition heats up and the fun keeps growing. I would invite all our 8 streamers to please step towards the stage so we can kickstart this massive, massive stream down. हॅलो. सगळ्यात पहिलं म्हणजे मला माईक बेकवर बोलता येत नाही. मी फक्त एवढी रिक्वेस्ट करण्यासाठी पुढे आलोय. मला माहिती आहे सगळ्यांना पहिले श्रीमानला बघायचंय, बरोबर ना? तर प्लीज सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, वरती ज्या गेटवर लोक उभी आहेत त्यांनी सगळ्यांनी खाली या. 5 मिनिटांमध्ये श्रीमान इथे येईल. 5 मिनिटांमध्ये श्रीमान इथे येईल. फक्त ते वरची गेट खाली करा. आणि जर तुम्ही असे शांत म्हणजे वरना जागा वगैरे भेटली नाही तर प्लीज श्रीमान इथे येऊ शकत नाही. Requesting our wonderful streamers to please kickstart their competition by stepping on stage. Can we have I Am Charlie, Devil Race, Nobita, Karnu, Aki, Jalebi, Mayur, Wolf is Life to please take up your respective seats and we kickstart this Battlegrounds Mobile India contest. Crafted in India. Can we hear it with a huge round of applause to Mr. Karan Pathak for all his support in the esports community and its massive growth. Very good evening to all of you, and this atmosphere sums up what each of you bring to these fans. Karan, if I could have a quick chat with you. Have you seen something like this before? Not really. The crowd, खूपच चांगले आहेत crowd.
खूपच चांगला, and this is the kind of atmosphere that will take esports to the very top, and we are seeing the growth. And let's just kickstart the streamer showdown. If I would request all of you to occupy your seats, Team A versus Team B. From Team A, once again, we have Charlie, we have Devil Race, we have Nobita, we have Karnu. From Team B, Aki, Jalebi, Mayur Gaming, Wolf is Life. It's going to be a best of 5 games in the TDM format. And a big thank you to Reliance Digital for revolutionizing Indian gaming, for all their efforts in making this grand stage a possibility. This event is powered by Omen, co-powered by Intel and HyperX. And शुक्रिया अदा आप सभी का, आप सभी फैंस का, जो आप इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आए हैं. आप इस इवेंट की जान हैं और इस इवेंट को इतिहास में याद किया जाएगा. इतने ह्यूज नंबर्स में आप आए हैं. एक नया रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे. We're moments away from starting the streamer showdown. बहुत जल्द हम कॉस्प्लेयर्स को भी देखेंगे. कॉस्प्लेस नजर आएंगे जहाँ पर आपके पसंदीदा एनिमे कैरेक्टर्स दिखेंगे, आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में दिखेंगे. गिव अवेज भी होंगे. तो हमारे साथ बने रहिए. आप चाहे घर से देख रहे हैं मुकाबला, चाहे आप यहाँ मौजूद है, जहाँ पर भी हैं, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है अगले कुछ घंटों में. तो हमारे साथ जुड़े रहिए. आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स हैं तैयार बीजीएमआई के लिए. क्या आप हो तैयार? आपने इन्हें ऑनलाइन खेलते हुए देखा है, अब आप लाइव देखने वाले हैं आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स को. शोर से उन्हें इशारा करिए. क्या आप उन्हें देखकर खुश हैं? कौन से स्ट्रीमर के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? उस स्ट्रीमर का नाम लीजिए.
चार्ली, सबसे पहले आप बहुत ज्यादा आपने मतलब इस तरह का प्यार आपने कमाया है. You're the chosen one. How do you feel seeing so much love and adulation? I know it's for all of you. There's a very special guest they're anticipating, but I could hear Charlie from all of them. So how proud and happy do you feel? मुझे पता है ये लोग सभी के लिए आए हैं, लेकिन स्पेशली एक इंसान के लिए आए. बस थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा काम रहो, और ऊपर ना थोड़ा गर्दी कम करो. श्रीमान भाई आ जाएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन बस आप शांत रहो, बाकी कुछ नहीं. गणपति बप्पा. चार्ली, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू द बेस्ट. यहाँ पर स्ट्रीमर्स शोडाउन शुरू होने वाला है. बहुत जल्द हमारे फेवरेट स्ट्रीमर्स आमने सामने होंगे. फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रिलायंस डिजिटल का, जिनके वजह से ये मंच मुमकिन है. तो एक बार रिलायंस डिजिटल के लिए जोरदार तालियां. और उनके साथ ही साथ इंटेल, HyperX एंड ऑफ कोर्स दिस ग्रैंड इवेंट इज पावर्ड बाय ओमेन एंड द वंडरफुल नेक्सस सीवुड्स के इस महामंच पर आप सब उपस्थित हैं. तो सीवुड्स के इस ब्यूटीफुल मॉल के लिए जोरदार तालियां.
now build up to the final moments where our streamers will begin the Battlegrounds Mobile India contest. Our casters are ready. Crips and Vivek will set this mega contest up for all of you. We saw Counter-Strike 2 in action earlier today with a legacy of over 2 decades. It was a match for the ages. And now your favorite streamers are going to battle it out in a mobile contest. BGMI का ये मुकाबला शुरू करने वाले हैं. Over to Crips and Vivek. दोस्तों, I think आप सब लोग यहाँ पे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, so we won't keep you waiting any longer. Streamer शोडाउन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है. Players already loaded हो चुके हैं. Vivek, how's the josh? I think the josh is high and it's only going to get even higher in a couple of moments. The atmosphere is electric. Everybody's favorite streamers are here, and it is, after all, India's national e-sport, BGMI. 2 teams, 8 mega streamers. लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला होने वाला है. मैं तो कोई प्रेडिक्शन नहीं देने वाला. मुझे नहीं पता कौन जीतेगा. Honestly, I just hope कि सारे मैचेस देखने मिले हमें. 5वें मैच तक जाए. Yep. I think it's going to be fun. The audiences have seen the teams, and I'm really curious to know if the audiences think one team is better. Guys, दोस्तों, left वाला team या right वाला team? Team A या Team B? काफी लोग A बोल रहे हैं, लेकिन B बोलने वाले भी कोई लोग हैं यहाँ पे. I think वो हिसाब से ऑडियंस में रोक के बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ए है. एक मिनट, सिर्फ यही साइड टीम में बोल रहे हैं. टीम ए और टीम बी. टीम ए और टीम बी. I think ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया है वो लोग किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. I think सबको मालूम भी है कौन कौन है टीम ए में, टीम बी में, लेकिन एक बार फिर भी हम जरा बता दें सबको. डेफिनेटली टीम ए में Charlie, Devil Race, Nobita, and Karnu 45. क्या लगता है इनमें से टॉप ट्रैक कौन करेगा? Once more. Okay. टीम बी के बारे में बात कर ले. विवेक, why don't you go ahead? Okay. Team B, we have Mayur Gaming, Wolfen's Live, Aki Topi, and Jalebi YT. Hey, we don't do that here. No booing. We don't do that here. सपोर्ट करना है, सबको करो. I know यहाँ पे टीम में फेवरेट्स है, ऑडियंस उनके लिए चिल्ला रही है, लेकिन यार अगर उनको कोई कंपटीशन नहीं देगा तो मजा आएगा क्या देखने में? Okay, I mean, you heard a lot of positive things for Team A. All the Team B supporters in the house, make some noise for Team B. है थोड़ा बहुत आवाज है अभी भी, पूरा वन साइडेड नहीं है. Absolutely. Nice. आप मजा आएगा. I also think कि ये जो TDM का जो best of 5 है, इतना simple straightforward outcome नहीं होने वाला. Yeah. Sure, you might have a fan favorite and the fans love whoever, but I don't think it's going to be that linear. I think it's going to be full of surprises, and I think TDM is at least my favorite anytime, any season in BGMI. Yeah. Exactly. Same. I love it. जिनके 5 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे, वही खेलूंगा मैं. Absolutely. या फिर कोचिंग की हॉट ड्रॉप करके इंस्टेंटली मार जाऊंगा. Yep. पर वो मजा नहीं आता उतना. That is not fun. I agree. Hot drops. I mean, I don't know. There was a time there are some people who really enjoy putting themselves through the fire, but TDM is mode where it's at. It's a mode you can play with your friends who are newer to BGMI. Everybody gets to play TDM. I think it's a very easy mode that doesn't require the highest level of strategy and what
action-packed. There will be a lot of prodding, but I think it should be fun regardless. तो दोस्तों शुरू करें. TDM battle between Team A and Team B. Between all these lovely streamers is about to go live in just a couple of seconds, ladies and gentlemen. You guys have been waiting here for a long time, and it's about time we get this battle started. Everyone's losing their patience, everyone's losing their minds, and very soon we're gonna have it all. I think the audience is definitely louder than me, right? 100%. No chance. Even if I scream into the mic, I can't match that level. 100%. Well, let's begin, ladies and gentlemen. शुरू करते हैं with this TDM battle. Team A versus Team B. We are going live. Samak. Never mind. We are going live with Team A versus Team B. It's a best of 5. TDM, BGMI at its finest as we drop into the first map and there's already a lead win. Woo, 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 we're already underway. Already 3.6 हो चुके हैं. And we are a little late to the party. Starting एक दो flags miss कर दिए अपन ने, लेकिन कोई बात नहीं. अभी जाके शुरू हुआ है and अभी और भी मजा आएगा. Somehow Team B is actually leading right now. Yeah, Team B right now has the lead and it's been Jalebi and Wolfix Live doing a lot of the heavy lifting. Jalebi running around and trying his hardest to find another kill. Bit by bit are catching up, but these seem to be all over the place, Chris. या क्वार्टर में कितना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट चार्ली ने एक और ट्रेड निकाला है. नाइस हेडशॉट ऑन टू अ KOP. ट्रेड स्प्रे, लेकिन जलेबी वाइटी वापस से ट्रेड लेते ही जा रही है. दैट थ्रोज अ लिटिल टू मच. फुल नाइस बैकअप. चार्ली को मार गिराया है. वहीं कॉर्नर में डेविल रेस ट्रेड करने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन ही डब्स बैक बिहाइंड कवर. और यहाँ पे एक अच्छी क्रॉस फायर पोजीशन में आके बैठ चुके हैं. मयूर गेमिंग वो पोजीशन नहीं है भाई. डेविल रेस को इजीली एलिमिनेट. अब KOP का जो कैंप था वो ऑलरेडी वापस काम आता है. नाइस ट्रेड, लेकिन एक बार फिर से मयूर गेमिंग टॉप पे आते हुए. भी बहुत ज्यादा आगे निकल रही है विवेक. Yeah, this is being a completely one-sided affair, and I don't think the audience was quite expecting this. Team B has come to play Crips. It's almost as if they heard the audience. Deliverance got only 2 finishes to his name, but if you look on the side of Team B, it's clearly Jalebi doing the heavy lifting, and Wolf is live coming in close. Phenomenal start. What? वन नेशी पे एक और किल निकाल दिया उनने. फाइनली चार्ली ने उनकी किलिंग स्ट्रीक तोड़ी. अकी उनको तो M249 मिल गई है. नाउ दिस इज गोना बी डिफिकल्ट टू डील विद. टीम बी के काफी सारे प्लेयर्स फ्रंट लाइन आगे तक पुश कर चुके हैं. करनू ट्रेड लेने के लिए आगे आएंगे. मयूर गेमिंग के ऊपर फ्री फायर करने की कोशिश, लेकिन नहीं, उनके सामने रीलोड करना शुरू कर दिया. Oh, this is really unfortunate. I mean, Mayur is trying to hold on to dear life, but I don't think he's going to get away with much. Will do a little bit of damage. Even probably set up for a kill. Gets Charlie. That's about it. He's done. Nobita elsewhere. He is lighting the scoreboard on fire. And finally, Mayur gets shut down. Mayur was really putting in the work, Crips. एग्जैक्टली. एक बार वो ट्रेन के अंदर वाली पोजीशन पे आ जाएंगे तो वहां से निकालना उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट है. लेकिन फिर भी जितना मोमेंटम उन्होंने बनाए रखा था, जलेबी उसके ऊपर कंटिन्यू कर रही है. अब KOP भी वहां पे आ चुके हैं. इनफैक्ट टीम ए को तो अपने स्पॉन से बाहर निकलने के लिए दिक्कतें हो रही है. एंड जस्ट 5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम अ विन. मेक इट 3. टीम बी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलते हुए जा रही है. एंड विद इन अ सेकंड इट शुड ऑल बी ओवर. KOP lands. Oh no, it was actually Wolf who got the last kill. Team B actually wins the first TDM battle. Absolutely. I said this in the pre-game that, you know, you might have a clear fan favorite, but anything is possible. And truly, Team B showing us that they are here to play. And I want to say it wasn't even close, Crips. It wasn't really that close. In fact, टीम बी के जो प्लेयर्स थे वो अंदर वेयरहाउस के एज तक आ चुके थे. उनके स्पॉन के जस्ट बाहर खड़े थे, जो क्रॉसफायर बना के रख दी थी बिटवीन द शेड एंड दैट वन लिटिल वुड स्टैक. उसके बीच ही क्रॉसफायर तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था. Yeah, I mean they pretty much like forced them in their base and like spawn camped them in. Pretty much. That's what it was. I mean they were pressed on their side of the map and they couldn't do too much. It looks as if Team A are reassessing their options, and they need to.
थोड़े बहुत जो इश्यूज है वो भी सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। पहला गेम है यार, वार्म अप होता है यार, वार्म अब अप तो तक बनता है। हाथ गर्म नहीं हुए हैं, अब Of तक वो course. फॉर्म में आए नहीं है अब Of तक। course. और फर्स्ट गेम है, अभी तो 5 और मैचेस है, बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला होने वाला है। जी। जो भी टीम पहले 3 गेम्स जीत जाएगी वो ये आई मीन ट्रॉफी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये शो मैच का विजेता बन जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो ब्रैगिंग राइट्स तो बनता है। Definitely. मतलब सबके सब इवेंचुअली घर पे जाके या बूट कैंप पे जाके स्ट्रीम करने वाले, और स्ट्रीम पे फैंस, वेल यू नो व्हाट द फैंस आर गोइंग टू बी लाइक। एग्जैक्टली। Lot एक of दूसरे के finger बाजू में blowing. आके भी बातचीत हो रही है, बैंटर तो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रैश टॉक भी शायद, लेकिन फिलहाल टीम बी ने जो लीड लेके रखी है काफी सिग्निफिकेंट है। Absolutely. 20 पॉइंट्स भी नहीं, आई मीन 20 फ्रैग्स भी नहीं निकाल पाए थे यहाँ पे टीम ए वाले प्लेयर्स। It felt like Mayur was trying his hardest, but it wasn't enough. He really couldn't get the kills that his team was hoping of him. But in the end, the rest of his team did more than enough. And yeah, I don't think, other than I'm Charlie, there were any real standout players on that map for me on Team A. Ooh, we have Kamaljeet Paji in the house. Arre! What a godlike human being. Indeed. Where is he? Okay. तो दोस्तों क्या लगता है, was the first game according to what you expected? No. Do you think comeback हो सकता है second game में? Okay. Nice. Do you think Team A will win the best of 5? No. Oh, पहले जिस तरह से टीम ए के लिए सपोर्ट मिल रहा था, शायद अभी एक वो मिनट, उम्मीदें कम इस होती तरफ जा ही रही सब है। बिलीवर्स थे अभी। Alright. ऑडियंस ने अपनी राय दे दी है, प्लेयर्स ने भी अपना सेटअप कर लिया है। आई थिंक मैंने कुछ प्लेयर्स टीम बी के इधर उधर जाते हुए देखे, एक दूसरे से बात करेंगे, शायद थोड़ा बैंटर भी हो जाए उन दोनों के बीच में। और आई थिंक उनका जो वार्म अप है वो अब तक पूरी तरह से हुआ नहीं था, इसलिए देख लिया ना, ये लोग भी जिस तरह से सेटअप करने के लिए अब तक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, तो वी विल स्टार्ट द सेकंड गेम सून। Yeah, we should be able to jump into game 2 soon. ऐसे थोड़े small technical issues fix हो रहे हैं, and yeah, I mean I don't think they're technical issues. It's more that they're really trying to figure out what the heck they need to do to win, and how they got beaten in such a one-sided fashion. A little bit of polite trash talking as well. It's always fun to see between friends. I think there were a few sound issues, perhaps. I think so too. I did suspect. Well, you know what they say. If you want to have the best possible sound systems in all of gaming, HyperX is your go-to. Absolutely. Guys, for those of you just tuning in on the stream, you're watching the Reliance Digital Level Up Citywide Championship, powered by Omen, co-powered by Intel and HyperX. We had India's first CS2 LAN. We had FiredUP winning that LAN. Now we have a best of 5 TDM show match between, well, a whole bunch of known personalities if you play the game, basically. And you can see the crowd that's turned up. They've turned up for them. They've turned up for Shriman. And they've turned up, most importantly, for the love of the game. Well, without further ado, I think we should be jumping into game number 2 soon. And here we go, ladies and gentlemen. Second TDM battle of the day. Let's get this started. And Mayur ko milta hai first finish. It's again Team B getting off to a good start. It feels like a repeat of game 1 so far, but Team A a little more of a punch, 2 quick kills, then nearly on the verge of equalizing. Anything is possible.
वुल्फ इज लाइव, नोबिता को तो मार गिराएंगे लेकिन चार्ली बहुत अच्छी तरह से बैकअप दे रहे हैं वुल्फ को। अच्छा ट्रेड निकाला है इनने, कर्नू को बैकअप की जरूरत है, बहुत करना चाहिए उनकी। मयूर और जलेबी दोनों उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, सो एटलीस्ट कर्नू तो मारे जाएंगे लेकिन पीछे से अकियोमी ने लॉन्ग डिस्टेंस से हेडशॉट दिया है एंड दैट इज ग्रेट। वुल्फ इज लाइव, व्हाट अ फॉलो अप। लेकिन नोबिता वो सेंट्रल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, मयूर उन्हें बिल्कुल जाने नहीं देंगे, वापस स्पॉन पे भेज दिया जाएगा उनको। वो कर्नू ऑलमोस्ट मारे गए थे, स्प्रे ट्रांसफर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो भी गया था लेकिन नाउ ही ग्रैब्ड ओवर हियर, ही टेक्स द अपॉर्चुनिटी। नोबिता ऑलमोस्ट गोस इन फॉर द ट्रेड लेकिन डबल आ चुका है। Beautiful stuff coming up from Mayur. I mean, peaks off his allies contact, gets a kill, and now it's Jalebi's turn to buy time. He's not more finishes, he needs to stay alive. Unfortunately, he's not going to be able to. Kanu will kill him down, and Akinobi elsewhere will pick up Deliverance. 8:15 though, Grips. It's still another one that has been spent. Team B are running away with this, and Mayur once again is pressing Team A into their own half of the map. Jalebi, he's provided great support so far, but Team A need to wake up and kick Mayur out of their half of the map. Exactly, मयूर जिस तरह से वो ट्रेन के अंदर छुप के बैठे थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता टीम के ऊपर। और जलेबी एक और चार्ली डबल किक हो चुके थे लेकिन एटलीस्ट चार्ली के मरने के बाद नोबिता ने उनका ट्रेन ले लिया, साइड कैप्चर बना लिया है एंड दैट इज ग्रेट। और यही मोमेंटम उनको आगे रखना पड़ेगा लेकिन मयूर उनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। Completely making use of the perspective, tries to peek off what information he has, and now one ball can be any kind of best friend. Because the people on the other side of the warehouse. Unfortunately, Nobita's going to be his undoing. Jalebi is still around and healthy though, and he's going to find the trade. They're still pressing Team A on their half of the map. If on this part of the map it's Jalebi and Mayur, and on the other side it is going to be Wolf and others pushing Team A back to their side of the map. Oh my God, नोबिता, nice shot, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? चार्ली अंदर आते ही मारे जाएंगे। मयूर is unstoppable. Finally, डेविल रेस ने आके उनको प्री फायर दिया और ये प्री फायर के कारण मयूर की किलिंग coming to an end. लेकिन वुल्फ वही पोजीशन पे आके एक बार वापस बैठ चुके हैं। जंप शॉट की कोशिश तो वुल्फ will spray him down and finally somebody stops it. Yeah, I mean, if you look at the others are pretty much just sitting and waiting patiently, and it feels like Team A is forced to just sit in their base, scope and wait for somebody to show and be out of position. I have some news. I have just received word कि ये tournament एक बेस्ट ऑफ 5 नहीं लेकिन एक बेस्ट ऑफ 3 रहेगा, तो इसका मतलब ये आखिरी 5 फिनिशेस जो है शायद टीम बी को पूरा शो मैच जिता देंगे। सिर्फ 4 पॉइंट्स अवे है। नोबिता चार्ली दोनों ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे बाजू बाजू में आके लेकिन दोनों को मार गिरा गया है। कर्नू ने फाइनली थोड़ा पेस पिकअप किया एंड चार्ली की तरफ से एक और गुड जवाब। ही इज ऑन द हाई ग्राउंड लेकिन नहीं, वुल्फ एक बार फिर से फाइनल फिनिश लेते हुए अपने टीम को ये शो मैच जिता देंगे। Phenomenal stuff coming out from Team B. Mayur Gaming for me, Crips, has got to be by MVP. It's not about the finishes, it's just about how well he played the map and played off his teammates. With that, Team B are the winners of your TDM show match. It was, well, everything that the fans didn't want, but yeah, I mean, जिस तरह से उनका टीम वर्क था, स्पेशली वुल्फ और मयूर के बीच का जो केमिस्ट्री था, बहुत ज्यादा अच्छा था। और जब उनमें से कोई भी एक मारा जाता था, जलेबी वाइटी वापस से आके उन्हें बैकअप देने के लिए पहुंच जाती थी उधर प्राइम पोजीशन पे। Yep. It was really good stuff coming out from Mayur and Jalebi. And all of them on Team B. I think on Team A, it felt like Nobita and Karnu. Early on, it was Karnu who was doing a little bit, putting in the work. Deliverance also did have his moments. But yeah, this is one of those odd days where the fan favorites weren't necessarily up to the mark. Yep. At least Charlie और Nobita जिस तरह से flank कर रहे थे, वो तो बहुत मजा आ गया देख के। चार्ली हमेशा साइड से जाएंगे और जैसे ही नोबिता मरते थे इंस्टेंट ट्रेड आता हुआ उनकी तरफ से। तो चार्ली का सपोर्ट डेफिनेटली ऑन पॉइंट था लेकिन काफी नहीं था जिताने के लिए। सपोर्ट बोलते हैं या बेटिंग? नहीं वो नहीं अच्छा जस्ट कंफर्मिंग। आई मीन उनका बैकअप अच्छा तो था और चार्ली जैसे ही फिनिशेस निकालते थे उनका टीम में से कोई ना कोई वापस उन्हें बैकअप देने भी आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी नहीं था। That is true, and it also feels like Team B just had better aim.
I want to say that their long-range sprayers were rather impressive. I saw a lot with the M4. So, yeah, better aim, better movement, more practice, more time. And, yeah, they are your winner of the TDM show match. And, guys, I think we are inching closer and closer to that time. Shriman time. Well, for now, congratulations to Team B. Your winners are Aki, Jalebi YT, Mayur Gaming, and Wolf is Life. Can we have a round of applause for the winners, please? Woo! एक और बार याद दिलाना चाहूंगा ये बेस्ट ऑफ 5 नहीं बेस्ट ऑफ 3 था एंड टीम बी दोनों मुकाबले जीतने के कारण ये शो मैच एंटायरली जीत चुकी है. Yeah. Phenomenal stuff coming out from TB. I mean, TDM ends in a flash, right? Especially when you're playing against a really good opponent. You do not have enough time to make an adjustment, a tactical adjustment. Maybe if this matchup was played a multiple number of times, over time, this matchup could change. It will change. It will change. मुझे अभी किसी ने बताया है एक सरप्राइज है आप सबके लिए. टीम बी स्टार्टिंग के 2 मैचेस तो जीत गए हैं और हाँ मुझे मालूम है आप सब लोग बेस्ट ऑफ 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वी हैव समथिंग बेटर. वी हैव अ सरप्राइज. एक और मैच खेला जाएगा एंड दिस मैच will be a pan only match. Pans only. Oh, that is so good. This is also my mother's dream because that's what she hits me with at home. So, Mom, if you're watching, this one's for you. Best of 1. Pan only. Pan India. Exactly. And now you can throw that stuff as well. Yes. So that should be really, really fun. I want to see how many people manage to use that effectively and what kind of damage it does. But yeah, it should be fun. Oh, definitely. I mean, I don't think I've ever had the opportunity to actually hit someone with a pan. The only time मैंने किसी को pan से मारा है was when I first downed him and then I finished him off with a pan. That's what I've normally done. But in a proper game, मुझे कभी किसी को pan करने का मौका नहीं मिला है. Neither have I. I've had pans deflect bullets for me, but never hit anyone with a pan. Yeah. Well, Team A is still all smiles. Of course, of course. I think they're ready for revenge now. They are ready. They are ready. बदला लेने की बारी है अभी. You know, in a best of 3 clips, you lost your first 2 maps. But if you manage to win that 1 map, which is pan only, I think you have made a statement and more. There's nothing more left to say. You have won and downed your opponents with just a pan. That is it. That is enough. You have done enough to have bragging rights for the whole day despite losing 2 games. So Team A, this is their chance, this is their shot at redemption. And redemption it shall be. Players lobby में आ चुके हैं. Loading done. बहुत जल्द we'll be starting with the next game as well. And it's not just the streamers who are in the game, but also the ones who are sitting in front of you. Huge shout out to Garuda. Audience आपको बहुत cheer कर रही है.
ढोले शोले तो देखो। Okay, the pans are being prepared. Team A versus Team B for one last time. And it is Nobita drawing first blood here. Oh, double for Nobita. Charlie also coming in. And he's just chasing Aki. Aki दौड़ते हुए नोबिता के पास जाएंगे. नोबिता ऑलरेडी काफी लो है. करनू को एक और मिल गया. And नोबिता को कोई मार ही नहीं पा रहा है. That's a fourth one for him. 4 finishes for Nobita. Nobita's come to play in half grips. Finally, Team B will put one on the scoreboard. They'll get another, but this one, this game has taken a complete different turn from our previous 2 games. Nobita has shown up and how, and it feels like Devil Race and the others are only mere spectators, as this is Nobita's world, and we are all just a part of it. Oh, no guns allowed. Put your guns back inside. Oh, कर्नू स्विंग करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत मिस हो रहा है. मयूर के ऊपर हल्का सा डैमेज, लेकिन वुल्फ को एक और फिनिश मिल गया है. चार्ली को पकड़ लिया इस बार. एंड नोबिता के आजू बाजू सर्कल्स दौड़ रहे हैं. He just simply can't connect. एक और स्विंग. ओ लेकिन 3 लोग नोबिता के बाजू में आ गए हैं. वुल्फ को अभी रोकना नामुमकिन हो चुका है. लेजेंडरी मिल गया है उनको. और एक्चुअली अगर देखें जाए क्रिप्स तो धीरे-धीरे टीम भी एक तरह से क्वाइटली कमबैक कर रही है. Then now have the lead. Nobita's hard work to an extent has been nullified, but this is a game of only bans. I mean, you want 40 finishes to win, so there's a lot of time and there's a lot of missed bans that are up and coming. But Mayur this time is starting to, well, do the same what he did in the previous map. Oh, he's picked up a machete instead of the pan. कोई भी फेंकने की कोशिश नहीं कर रहा है. I'm surprised. तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने टीममेट्स के ऊपर नजर रखिए. ऐसा ना हो जाए कि आप पैन करने के चक्कर में 4 ओपोनेंट से घिर जाएं. तो आप अपने से ज्यादा अपने टीममेट्स के ऊपर नजर रखिए. ये दौर लगाइए, ये गौर रखिए कि आप ज्यादा अकेले ना हो जाए, ताकि कोई आपको मारे भी तो आपको ट्रेड करने के लिए बाजू में होना चाहिए. Absolutely. एंड वही प्रॉब्लम हो रही है अभी कर्नू के लिए. उनको 2-3 लोग से डैमेज पड़ा है. फाइनली वुल्फ ने जाके उन्हें मार गिराया है. एक बार फिर से टीम बी लीड पे है. Like you said, this game is about playing with your team. अगर आप आसपास एक साथ खेलते हो तो आप एक दूसरे के लिए ट्रेड कर सकते हो और एक हद तक आप नंबर्स एडवांटेज मेंटेन कर सकते हो. Oh my God. ओवरक्राउडिंग हो रही है and it's Team B that's coming out on top. Clips. Karnu sure gets a kill, but Team B still has the lead and nice one, slowly Nobita. bit by bit Team A is catching up. Clips. नोबिता चार्ली दोनों मिलके बहुत ज्यादा तहलका मचा रहे हैं. वुल्फ अभी अकेले पड़ गए हैं. कर्नू उन्हें दूर ले जा रहे हैं, उनके अपोनेंट से दूर, लेकिन वुल्फ ने एक बार फिर से कर्नू को मार गिराया है और अब चार्ली को भी. माय गुडनेस, समबडी स्टॉप दिस मैन. वुल्फ तो यहाँ पे पैन चैंपियन निकले. Pan after pan, pan after pan, time after time, day after day, map after map. It is Team B that's still holding on to the lead, but for how much longer? It is Wolf's life though, not Mayur Gaming that's doing a lot of the heavy lifting. And this time Jalebi will manage to find one. It's Devil Race knocked and finished, and Wolf's life will get knocked unfortunately, but all said and done, Team B still has the lead. Mayur Gaming is trying his hardest, he's buying time, he's making space, and that just could be enough. He wants Devil Race, he doesn't have too much HP, but he's running for life. Mayur Gaming unfortunately will have to reset and reconnect with his team. Akidobi gets banned down in the corner of the map, and Wolf's life finds Charlie. He could find another. A lot of people swinging pans left and right, but eventually, all said and done, it's Karnul that gets knocked and dropped, and Jalebi will also fall. The red team still has the lead. Grips. The blue team is starting to lag. Oh, Mayur, he hasn't taken damage at all. बहुत ज्यादा अच्छे से वो अपनी एचपी मेंटेन कर रहे हैं. जलेबी भी यहाँ पे बैकअप देने की फुल कोशिश कर रही है. वन मोर पर्सन गोज डाउन. मयूर को पैन डाउन कर दिया जाएगा और जलेबी को थोड़ा डैमेज, बट जैसे ही उनको डैमेज पड़ा उन्हें नोबिता में पता निकाला है. एंड शी इज गेटिंग गैंग्ड अप नाउ. चार्ली एक बार फिर से जलेबी को फिनिश करेंगे, वुल्फ को भी फिनिश करेंगे. दोनों प्लेयर्स जो लो थे उन सबका फिनिश अपने खाते में डालते हुए एक बार अपने फिर से टीम को लीड देंगे. 3 पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ ब्लू और रेड के बीच में, और वुल्फ एक बार वापस से आ गए हैं. उनका फिलहाल सबसे ज्यादा फिनिश पॉइंट्स है, एंड ये लीड क्या वो मेंटेन कर पाएंगे खुद के लिए? मीन
मीनवाइल अकी ने अब तक एक भी फिनिश नहीं निकाला है और ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न की चीज हो सकती है। Absolutely, Aki's had a very quiet game. He'd like to get on the scoreboard at the very least, if nothing else. All said and done though, Team A are catching up Crips. This is anybody's game. It's a very slim lead. Positioning and training each other is so important. You do not want to go on isolated expeditions and get picked off without doing any damage. Oh, she survived. जलेबी बहुत लो ऐसी हुई थी एंड उनने बहुत अच्छे से ज्यूक किया, स्लाइड करके ऊपर जाके उनने एचपी भी रिकवर कर दी है और अब वो पंच कर रहे हैं। ओह, लेकिन फिर भी नहीं मार पाएंगे वो नोबिता को। नोबिता का पैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा उनके हाथों से। मयूर, ओह ही इज वेटिंग, वो ताना मार रहे हैं उनपे, कह रहे हैं आ जाओ इधर आके दिखाओ और फाइनली ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। चार्ली अंदर जाते हुए ही इज लीडिंग द चार्ज जस्ट लाइक हिज नेम सजेस्ट एंड उनके पीछे पीछे नोबिता, ही इज लीडिंग देम अवे फ्रॉम द एनिमी ताकि वो वापस क्राउड ना कर सके उनको। आइसोलेट करके मारने की कोशिश की जा रही है वहां पे, लेकिन चार्ली की तरफ से एक और फ्रैग, नाइस वन। जलेबी वापस से ट्रेड लेंगी, चार्ली अनस्टॉपेबल हो रहे हैं। चार्ली के पास 13 फिनिशेस है और उनको रोकना अभी ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। उनकी तो एचपी भी कम नहीं हो रही है। करनू मारने की कोशिश, लेकिन अभी सर्वाइवल उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मयूर उनको फाइनली चेस डाउन कर देंगे एंड चार्ली विल बी डाउन। करनू को भी मार गिराया है। अ डबल फिनिश, जस्ट 1 पॉइंट अवे फ्रॉम अ विक्ट्री। टीम बी माइट जस्ट विन दिस अगेन। Or Team B have done it for a couple of moments in the beginning. Crips, it looked as if Team A could win, but even the one-off pan-only show match is won by Team B. Hence proved the pan is indeed mightier than the sword. The pan is indeed mightier than the sword. 3-0 की जीत हासिल की है टीम बी ने यहाँ पे। 2 नॉर्मल TDM मैचेस विद द गन्स, उनमें भी जीत गए, लेकिन पैन वाली बैटल बहुत ज्यादा क्लोज थी। एक टाइम पे सिर्फ 3 पॉइंट का अंतर था और वो 3 पॉइंट से कैसे 5 पॉइंट तक वो डिफरेंस खींचा गया था। That's how Team B was able to win. Very, very well played. और अभी एक बार बात कर लेते हैं इन स्ट्रीमर्स से। Our host सार्थक will be talking to them live. Thank you, and let's hear it for Team B. Aki, Jalebi, Mayur, and Wolf are your winners. Requesting you, if you could please come to the front of the stage. Congratulations, एक जबरदस्त जीत BGMI की। एक शानदार मैच थी जिसमें आपके चारों के तरफ में बीच में जो तालमेल दिखा, टीम वर्क, यूनिटी जो नजर आई। हालांकि एक फ्रेंडली मैच था, लेकिन राइवलरी और कंपटीशन, आप उस चीज़ को मायने रखते हुए इतने अच्छे फॉर्म में नजर आए। क्या खास कारण था आज की जीत का, आप बताइए। बेसिकली तो अभी जो गेम खेल रहे थे अपन, तो हम लोगों ने कभी ज़्यादा एक साथ खेला नहीं है। बस मेरा और मयूर भाई का कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा है, बाकी इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा खेला साथ में। सब लोग गाइस सब लोग आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ। बहुत फन रहा इन लोगों के साथ मैच खेलने का। एंड हमारा मेन मोटिव यही था कि पहले जीत जाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ देखा जाएगा। बट पैन वाला जो मैच हुआ उनमें इन्होंने कितना अच्छा खेला आप लोगों ने देखा होगा। और बेसिकली इनके पास हेडफोन्स नहीं थे तो इतना मैच का हम लोगों को भी कॉम्पिटिटिव नहीं मिला, लेकिन अगर बेसिकली हेडफोन्स होते तो भाई ये लोग किल करते, भाई बेसिकली हार्ड हो जाता। ये होती है स्पिरिट। जीते हैं लेकिन अपने अपोनेंट्स को, अपने राइवल्स को क्रेडिट भी दे रहे हैं कि हेडफोन्स नहीं थे। ये होती बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच। तो तालियां हो जाए इन सभी के लिए, आप सभी विनर्स हैं। जलेबी, आई वुड वांट यू टू कम टू द फ्रंट। यू वर फिनोमिनल, इतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर पुरुषों के बीच में, आप एक शाइनिंग स्टार साबित हुई। आपने इस गेम में क्या अलग किया दैट यू कुड विन इट एंड डू सो वेल इन सच अ वंडरफुल ऑडियंस? शेयर इट विद अस। ॲक्च्युली आय प्ले लाईक दिस ओनली, और हे माझे सगळे लाईक फ्रेंड्स टाईप आहेत. सो असं नाही आहे, मला फक्त चार्लीला मारायचं होतं. मी जलेबी को सिर्फ चार्ली को हराना था। चार्ली, आपके थॉट्स? मुझे नहीं पता ये क्यों हराना था, बट आपने हरा दिया है फाइनली। तो यहाँ पर एक राइवलरी जलेबी और चार्ली के बीच में, लेकिन
आपसे जानना चाहूंगा ये जो माहौल है आपके फैंस के लिए, आप क्या मैसेज पास आउट करना चाहेंगे एक बार फिर से? आई लव यू श्रीमान फैमिली. Keep the energy going, your winners, Team B. Let's hear it once more for all of your wonderful streamers, all 8 of them. उनके लिए एक जोरदार applause. तालियां यार, सुनाई नहीं दे रहा है इन्हें. Okay, now we have a very special competition. It's the cosplay event. यहाँ पर आपके favorite characters, anime characters, gaming characters stage पर आने वाले हैं. This is going to test their creativity. आपको ऐसे लगेगा कि एक painting है जो जिंदा हो चुकी है. तो ये कंपटीशन यहाँ शुरू होने वाला है कॉस्प्ले का कुछ ही मिनटों में. तो हमारे साथ बने रहिए. उसके पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का. थैंक यू सो मच एंड वी होप टू सी यू अगेन at the very best and thank you for your time. We'll be heading into a short break. Break के उस पार cosplay and lots of fun. Stay tuned with us. Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.
All right, we come down to the most awaited moment of this wonderful Sunday. It's time for the prize distribution, and I would like to call on stage our respected dignitaries, our special guest, calling on stage Mr. Brian Bade, the Chief Executive at Reliance Digital. Can we please have Mr. Brian Bade on stage with a huge round of applause? Please, sir. I would also like to invite on stage Mr. Pradeep Bhosle, the Chief Merchandise Officer at Reliance Digital. Mr. Pradeep Bhosle, please come on stage, sir. Can we hear it for Mr. Pradeep? All right, we have a very special guest amongst us. Can we have Mr. Karan Pathak from Crafton, India, the India head. Thank you so much, Mr. Pathak. We'll start off with the second prize and the winners. Can we hear it for the team that came back in the semi-finals from a 10-round deficit, made it to the finals. Blaze Gaming! Can we have Blaze Gaming on stage? They showed tremendous fight and determination. Request Mr. Brian Bade to please hand over the Currently, if you could hand over, also join him, please. Thank you. Commendable performance by Blaze Gaming. There was a point today where they again won 9 straight rounds in the Counter-Strike 2 event. They showed amazing fight. और जैसे कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और सेमीफाइनल में आप सच में बाजीगर थे. आज आपकी बात नहीं बन पाई लेकिन we hope to see you in many such events and grabbing that trophy. Once again, a huge thank you to Reliance Digital, to Nexus Seawoods, to Omen, and to HyperX and Intel for bringing together this wonderful event. Digital Level Up has certainly raised the bar for esports across India. And now it's time to move forward. I would like to thank Blaze Gaming, and we head now towards the first prize. And now the champions. And now to call upon the deserving winners of that glittering trophy. Can we call on stage your champions for the night? Team Fired Up! Led by Rossi and a team that had 2 players with the name Ghost. There were 2 ghosts in the team and they certainly thrilled one and all. Can we hear it for each of them? 5 superstars. Requesting Mr. Brian Bade, Mr. Pradeep Bhosle and Mr. Karan Pathak to please hand over the trophy as well to your champions. Your champions for Counter-Strike 2!
Fired Up! Digital Level Up! Presented to you by Reliance Digital, your gaming tech destination, and your winners of this massive game is our team Fired Up. Can we hear it for the wonderful team led by Rossi once more? Joor bachaiye iske. Mubarakbad. Congratulations and take your hearts out. You're the deserving winners. 3 लाख इनके नाम और बहुत मुबारकबाद बधाई हो. And that brings us to the end of this wonderful event. I'd like to thank each one of you for turning up right in the morning on this Sunday. आपके साथ के लिए बहुत शुक्रिया. और आपके बिना ये इवेंट कामयाब नहीं हो पाता. हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को और बढ़ावा देंगे और प्रोत्साहन देंगे और ऐसे ही मात्रा में, ऐसे ही नंबर्स में हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. Thanking the wonderful guests, Mr. Brian Baird, Mr. Pradeep Bhosle, and Mr. Karan Pathak. Thank you so much, sir. Thank you. And once again, requesting Team Fired Up to come ahead for some more pictures.